in front of you and share my experience with all of you. Thank you. So, next slide. Okay. So, I'm going to talk about application of fragrances to consumer products. Now, major product categories are personal perfumes, which are alcoholic products, where perfume percentage will be around 15-20%, balance will be alcohol or alcohol plus water. Soap bars, it's a big tonnage product. Various soap products are available. Liquid soaps, which is becoming more and more popular, and in European market and other developed countries, more of liquid soaps are used than bar soaps. Shampoos, of course, for hair care. Cosmetics in general, which includes lotions, creams, and other skin products. Dental products, that is for mouth cleaning. So that includes tooth powder, toothpaste, and even mouth cleaner. Now, tooth powder is particularly for India-like countries. Elsewhere, they use only toothpaste. Detergents, that includes bars, powders, and liquids. Bars are again typical of developing countries, not in other countries. They use more of powders and liquids. Okay, next. Now, what is perfume's role? It's a primary role in soaps and cosmetics, because otherwise the products are very similar to each other. Perfume distinguishes one product from other majority. So if you like the perfume, you tend to buy that particular product. So soaps as well as all cosmetics, they have the major role. Secondary role is in detergents and laundry products. Nobody buys detergent because it smells well, unless it cleans clothes. So that is the major part of that product. And so it has to clean the clothes well. Then for the sake of aesthetics, perfume is there. Sometimes there is a signal role which satisfies the claims that is made. Sometimes they say this contains natural orange oil, natural lemon oil, natural sandalwood oil. So even in minuscule quantities, at least it should be there to satisfy the claim. It may not be proven by clinical trials or any laboratory trials, but it will give the legal binding on that product. Basically, it imparts aesthetic sense, because without perfume, if you smell any product, it will have fatty, alkaline, and all other base notes. Because base constitutes larger part, fragrance is only around 1%, 1.2% in soap, and even much less in cosmetics and detergent, hardly it is 0.1, 0.2%. So just that small quantity of perfume, it changes the total complexion of the product. And it covers unpleasant base notes, as I said. Yeah, next. Now, product usage-wise, there are major three types. Leave-on cosmetics or leave-on products, which are applied on the skin and they stay there. They are not washed off. Like creams, lotions, and even talcum powder. They are called leave-on products. So they come in contact with the skin throughout the time and they don't get washed off. So if there is any adverse effect that has to happen, it will happen mainly because of leave-on products. Next one is wash-off products like soaps, shampoos, etc. They are applied on the scalp or on the body, but immediately within few minutes you wash it off. You don't allow it to remain there. And so they are wash-off products. It comes in contact with the skin, but doesn't remain there for a longer time. And third is detergents or any other laundry products, where not the full skin, but only part of the skin can come in contact. Like if you are standing in the bathroom and washing clothes, maybe part of your heel or your hands, if you are soaking the clothes, if you are applying detergent bar, etc. So only part of the skin comes in contact, not the full skin. And so it is much
more safer. But and also the perfume quantity is also much less in detergents, not as much as in soaps. Next. Now, how do you make the choice of materials? You should, the perfumer who is creating the perfume should know the intended product, the color, form, and the base quality. Because if you take particularly say soap, 75, 76 or 78 will be the TFM, that is total fatty matter. So that constitutes the major part. Perfume is only 1%. So you should know the color. For example, if it is a floral perfume, you should not put in green soap. Or for green soap, you should not put floral perfume. But you should go for either lime lemon or herbal perfume. So that there is a good match and psychologically consumer feels like buying it. Normally woody perfumes are put in brown colored soap, not in pink. Pink is particularly for floral perfumes. So you should know that. You should know the form also, whether it is liquid form, bar soap or powder, etc. So accordingly, because powders have large surface area, perfume loss can take place physically. And so perfuming is different for powders, different for liquids, different from bars. Marketing strategy claims category consumer. If it is given as a product for young people, a type of perfume will change. If it is a family product, then generally from child to old people, everybody will use it. If it is for sports people, like earlier Lifebuoy was projected that way, for sports people. So it will take care of more hygiene, killing bacteria, etc. So accordingly your materials will be there. What is the type of packaging? In the case of shampoo, creams, lotion, toothpaste, packaging is quite safe because you take the product out and immediately close it. But that is not the case with soap. Soap you buy, open the wrapper and throw it. Then it is kept in the soap dish. So it is exposed for 15 days, 20 days to atmosphere. And so the surface is open. Product category, whether it is premium product, discount brand or just a popular product. Because premium product means consumer is willing to pay as much money that you are charging, but they want a good product. They don't want compromise on the quality. But discount brand, every rupee counts. So you have to choose the materials accordingly. You can't have very sophisticated perfume in a very discount brand. Product volume. Why this is important? Because initially suppose company wants to launch 1000 tons in the market. Perfume is at 1%. So you will require materials for 10 tons of perfume. Tomorrow, because of good luck for the company, suppose the tonnage goes up from 1000 tons to 10,000 tons. Your perfume requirement also will go 10 times. That time you should be able to procure that much material. Otherwise the purchasing person will say, I am not getting so and so material. Then you have to find a substitute, which may not be possible every time. And that's why product volume is important. Stability data is very important because the perfume as such may smell nice. When you put in the product, initially it may smell well. But India is a country where temperatures vary from coastal to interior. If you go to Jabalpur, Kanpur, Nagpur, 45, 48 temperature is quite normal. There are humid climates around coast like Mumbai, Chennai, Kochi, etc. But there are dry zones. And so stability data generation is very important. Otherwise product after launching it will fail and it will come back. And if you get a negative response from the market, it's very bad for the product, for the company. And that is why you should ensure that product is quite stable. Even minor ingredients you should not ignore. For example, in detergents, they put enzymes or bleaches or some other odorous materials. They can create havoc. And so even minor ingredients, you should not say, oh, this is only at ppm level, so I don't worry.
No, that ppm level material also can become problematic. And cost limit. After all, we are working in industrial situation. This is not a charity. And so in the given bracket, your perfume should be fitting. And that is why the cost brief also should come to the perfumer. Next, please. Now, let's come to personal perfumes. It is alcohol based. So, fragrance level is decided by the strength of the perfume and also intention. Whether you want strong perfume, mild perfume, etc. Now, since it is alcohol based, perfume should be completely soluble in alcohol. There should not be any turbidity, haziness coming in the product. And so, solubility should not become a problem. If there are more terpenes, non-polar materials, they will separate out and it will give haziness. Haziness means immediately consumer feels it is impurity. Though it is natural material, it will be taken as impurity. And so nobody will like. Dark color sometimes leaves stains on the clothes. And so you should choose the materials accordingly. So sometimes colored materials like labdanum resinoid, etc. will give stains. Oak moss will give stain. So you should use the molecular distilled products in such a case so that color is very light. It doesn't give any stains on the clothes. So color also you have to take. Quality now depends how you are projecting your alcoholic product, whether it is a premium brand or mass market brand. Accordingly, you have to choose the quality of materials. Sometimes when it is a very premium brand, even for small bottles, people will pay lot of dollars. And so choice should be, they want all premium materials. So musk, if you are choosing, it should be exaltolide, amyretolide, that type of musk, not a simple musk. So that consumer should feel it is a premium product. Compatibility, again, this is, it should not separate into layers. It should not give haziness. Darkness should not be there. And some constraints are there. Suppose you are following IFRA guidelines. Then, because it's an alcoholic product, you will spray on the body and so it will remain there. So those constraints also you have to take into account. And after all, cost. Next one. Soap bars. Soap bar is particularly very important to design the perfume because when you are making noodles, you have to make sure that it has acceptable odor. It should use only acceptable type of oils. Nowadays, all the vegetable oils are not affordable in soap. And so you go for ordinary products like PFAD or palm kernel oil, etc. So what is the quality of that base? That you should ensure. Secondly, perfume as such also you have to smell in the product and in the blend and also in the finished product. So it should not change its major character. What you have intended, it should smell that way. Again, availability. Like in the earlier slide I said that soap tonnage, when it goes up, you should have alternate supply also ready so that there is a fallback option. Otherwise, production will suddenly come to end and that will be a big loss. Safety in use, whatever safety guidelines you are following, if you are following IFRA guidelines, if you are following BIS guidelines, whatever, or you may have your own internal guidelines, and so you should follow that. And again, cost, because suppose they say 5,000 rupees per ton of soap, 10,000 rupees per ton of soap. So if it is 1% level, that means you will require 10 kilos per ton. So 5,000 means your perfume cost should not be above 500, including your profit and just a buffer. So you should choose the material so that it fits in the cost. Next one. Liquid soaps, they are very similar to shampoos. And so I am covering them together.
Now again, color and appearance. Here, after adding the perfume, it should not change the color of the base. Otherwise, sometimes browning happens, darkening happens, orange color, etc. So originally it is suppose green, and you put the perfume which is dark, it will change the complete shade. So that should not happen. Again, the marketing strategy here, because many of these products are premium also and also discount. So you should know the market, what is the marketing strategy. Product compatibility is always there. Even if you put shampoo in sachet, there is physical loss. Later on, if you see the temperature sample, high temperature samples, usually drying happens inside moisture. Along with moisture, even perfume is lost. And so there will be change in the character. So shelf life has to be ensured, and cost. Next one, please. Cosmetics, creams, lotions, lipstick and lip care products. Now creams are applied on the skin, so it is a leave-on product. As I said earlier, very stringent conditions will be there, because certain materials can have allergic effect on the skin. And so you should choose the materials accordingly. Sometimes in the cream, after putting the perfume, there is layer separation. Sometimes drop in the viscosity, that happens. And so you have to take care in the case of creams as well as lotions. Now lipsticks and lip care products, perfume plays indirect role, but you have to choose the materials which are approved for flavors, because you are applying on the skin where food can enter also, and along with food, some quantity of lipstick or lip care that is likely to enter the body system. And so though it is a fragrance product, ultimately you have to choose the materials which are approved for flavor and not for ordinary fragrance. Talcum powder. Talcum powder is very popular in humid hot countries like India, and perfume is sprayed on it, but it has very large surface area. Plus it has magnesium silicate, etc. that can have some reaction with the perfume ingredients also. And so you have to choose the materials which are compatible with talcum powder. Face wash. Face wash again, face skin is very delicate. So your material should not have any harsh effect, any untoward thing happening on the skin, and it should not result in some allergy reaction. Next one, please. Toothpaste, tooth powder, mouthwash. Again, all three are dental products, and they have to have all the flavor materials. Typically peppermint, spearmint, clove oil, and your even wintergreen, that is methyl salicylate, etc. is very popular because they kill the bacteria. Many of these are phenolic materials, like clove oil contains about 85% eugenol, which is a phenol. And methyl salicylate is completely phenolic. So they kill the mouth bacteria, give hygiene to the mouth, and freshness. Freshness is mainly achieved through menthol and mentholic products. Tooth powder, again, like talcum powder, it has large surface area. So when you add flavor, there can be physical loss from the surface. And so tooth powder, again, typically in a country like India, it is popular. Elsewhere, people don't use tooth powder. But India still lot of dantamanjan and tooth powder that is available. Mouthwash, gargling, etc. people use a lot of materials. Again, it will be all flavor materials and killing the bacteria and keeping the mouth fresh. Detergent, household products. Now detergent is a huge market. Lakhs of tons will be produced, but perfume level will be very low. Even starting with 0.05%, 0.1%, 0.2% is quite common. 0.5% is on higher side. So nobody puts so much of perfume there.
Again, as I said earlier, it is a secondary role. Nobody buys detergent because it smells good, unless it cleans the clothes well. Bars and powders and liquids are popular everywhere, but bars particularly because we rub the bar on collars and other soiled part of the clothes. People in developed countries don't use bars. Laundry soap is again typical like Indian people. And so we still use lot of laundry soaps. There are lot of brands in South India also and everywhere. And everybody had laundry soap. Scourer bars and powders for utensil cleaning, etc. People put more than bars. Now people go for liquid, but when powder is there, there is abrasive action also. So cleaning becomes easy. But nowadays people want just dishwashing, etc. through liquids. So in summary, what I would say, perfume plays a key role because though it is in minority, 0.5%, 1%, it completely changes the complexion of the product. With perfume and without perfume, there is a big difference in smell. And so people, if they are hooked onto a particular product, you tend to buy it throughout. Choice of perfume is very crucial. As I said earlier, the creative perfumer has to choose the materials by full thinking on that. It is not easy because otherwise if there is a mismatch, perfume is good, but it doesn't fit in the product. It will never see the light of the day. Product compatibility very important. Otherwise, in the beginning it smells at one time. Over a period of 1 month, it smells different. And the shelf life, if it is expected as 3 months or 6 months, afterwards, there will be hardly any perfume remaining, more of base odor. And it will invite consumer complaints. And so consumer acceptability has to be there. Though the creative perfumer and manufacturer, they say it's a very good product. But if the consumer doesn't accept it, it will never have any good success in the market. And cost versus quality. This is always a dilemma because if you choose good materials, it is very difficult to get product at a cheap price. Price is always, all good smelling materials always cost more. There is hardly any material which is very premium smelling but available at cheap price. No, there is commensurate price with quality. Now if you go on reducing the quality and reduce the cost, at one time or at one stage it will appear that product is okay, strong smelling, or it has good odor. I mean, there is lot of odor but not premium odor. So cost versus quality, there has to be one optimum solution. There cannot be any best solution for that. Okay. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an amazing session, such an information that I think everybody needs, right? Everyone enjoyed the session? Can I hear yes, no, maybe? I'm sure yes, because sir was quite apt and the session was quite informative. So now, ladies and gentlemen, are we ready for the next session for the day? Yes? Do I hear a yes a little louder? Okay, then let's begin the next session for the day, and that is conducted by none other than Mr. Ramakant sir, Director Nishant Aromas Private Limited. Yeah? Can we please give a huge round of applause for Ramakant ji, who is the Director of Nishant Aromas Private Limited.
All right, everyone, let's get ready and welcome Mr. Ramakant sir with a huge round of applause. All right, who's going to be giving the insights about the products we need in our day-to-day life, and of course, our prime product for the day. Over to you, sir. Thank you very much. And I would like to express my very much thanks to the Incense Media and Deepak Ji Goyal, who arranged this lecture series also of the today as well as tomorrow. I will just try to speak on the agarbatti and its industry based on my own experience of last 30 years. So, as you know, today we have very good startup from our KVIC chairman, Mr. Amit Kumarji, who is the CEO of KVIC. And KVIC is very much important and instrumental part of the MSME industry, which helps in many of the startups for the agarbatti ventures in throughout India. And during the discussions with him as yeah. So, our very good friend and director of FFDC, Sri Shuklaji was there. So, he has gave very good information that they are trying to help out many of the MSME for startup ventures in India, and they will be giving, they are already giving lot of supports in the form of training through FFDC, as well as second form of help is by distributing the pedal machines, which they agreed now to give the automatic machine to many MSME throughout the country, which will be a great help, like something like 1,000 machines, 1,000 ventures, they are going to help out in the years to come. And that will start many of the micro and small industry throughout the country. And this is very much need of the hours, because many people who are looking for the startup venture, for them it is a very good help to start with, because we are very big cultivator of essential oils like geranium, lemongrass, citronella, palmarosa, patchouli, and so many other products. So we do develop lot of products out of it in the form of essential oils, hydrosols, as well as the solid products, which is containing a lot of high sesquiterpene molecules, and which has very good olfactory value when it is used for burning purpose. So, like in our Maharashtra alone, thousands of machines have come up in the last 3 years for distillations of geranium leaf, which are grown by many progressive farmers in lieu of this geranium, which we have been importing from China. And now, due to the very good efforts of successful variety has come, and that geranium variety is being adopted by almost, which made India self-sufficient, or we have made Atmanirbhar Bharat for geranium oil. So, but now the our it is not a byproduct, but I can say that it is a main product in the form of spent geranium powders, which gives very good burning effects when it is used for making the raw batti. Here you can see lot of exhibits are there, and you can learn very good ideas about how to make agarbatti with the machines, and cones and dhoop sticks also can be made with so many machines which are giving live demonstrations here. So you can very well utilize these geranium powders for such kind of making natural incense, which has huge demand in the world market. Same way, other crops which are grown in India in a very big quantity, like vetiver. India become again vetiver self-sufficient, Atmanirbhar for vetiver oil,
which was imported from Haiti, and where geranium was imported from China, and now also it is being imported from Egypt. India is the largest consumer of geranium. So, seeing these kind of developments in last couple of years, due to the efforts of our so many CSIR, FFDC, and other organizations, so large scale cultivation has taken place throughout the country, and such kind of so to called as a byproduct, but it is not a byproduct. In my eyes, it is a main product. So that can be used for making agarbatti. If you see the history of agarbatti in India, agarbatti was nothing new, but it was a miniature form of yagna. In the past, our people have been performing yagna in temples and many spiritual places. But now, about few hundred years back, in state of Karnataka, where lot of production of sandalwood was taken place, and the sandalwood dust was available from that sandalwood oil extraction in the state of Bangalore, in the state of Mysore, and there agarbatti industry came up, and due to the efforts of that time ruler Wadiyar family, Krishna Raj Wadiyar and those people, they used this sandal powder to make the agarbatti in the state of Mysore, and that became quite famous, and Bangalore, Mysore was known as a Makkah of agarbatti industry for hundreds of years. And now that same Bangalore and Mysore has got the GI tag also for making agarbatti of Bangalore and Mysore origin. But now agarbatti industry is spread throughout the country. Like Gujarat, you have huge quantity of manufacturing of agarbatti base, whereby almost more than 2,500 crores worth of agarbattis are being made in the form of masala agarbatti as well as scented batti. So this business not only serves the local domestic market for agarbatti, but it also serves the export market, because the export of agarbatti has a huge potential if it is made in a right direction with natural ingredients. And we see every year many of our leading exporters who are present here also with the form of their booths. You can visit them and you can see their good quality of batti as well as nice packaging, and that enabled India to make lot of forex earning, net forex earning, whereas the input cost is hardly any import now taking place for this industry. So it is net brand ambassador of India, whereby spreading our fragrances throughout the country. And I think this sound is creating big nuisance. If somebody can stop it, I think if organizer can tell someone. दीपक जी को बोलिए ना, पीछे आवाज बहुत आ रही है ना. So, sandal agarbatti or even for rose geranium powders can be very, very well used. And as I told you, other woody agarbattis which you can see across the very big exhibition which is being put up here. This is, I think, probably one of the biggest exhibition I have seen in my career of 30 years. And now this agarbatti, raw batti making, which was hand rolled in the past, is now very much made through the many of the machines which I have seen right from their journey from Japan, whereby thin agarbattis were made with the automatic machines, and those machines were very expensive. Not many Indian companies could able to afford in those days. So these machines were later on made by many Taiwanese company, and then after the Taiwan, China came into picture and they made the cheaper machines. But after China, Vietnam came, and now it is a ton of India, and we have the huge population, whereby lot of agarbattis till almost a decade back were made through hand rolling agarbatti, but now
you can see that most of the agarbattis are being made through the proper premix with the many of the adhesives of the natural jigate and this almond powders and many of the resins. So these resins are having its own fragrant value. You can visit some of the stall and the exhibit of all the resins as well as many powders are being displayed by many leading companies here throughout the country. And it is a good opportunity to see the galaxy of the form of batis, which comes very nicely in the form of burning. So I think it is a very nice opportunity for anyone who wants to enter into the segment of agarbatti business as a startup to visit this whole exhibition. And if anyone has more query, please do not hesitate to ask me, because we have traveled a long journey of more than 30 years. As I told you, we started on this segment more rigorously, although from 1984, but more intensely we started in 91 our own journey with the making of agarbatti and selling fragrance to many of agarbatti manufacturers of Bangalore, Mysore and throughout the country. And many of the brands which become very successful because of the main thing is here is the fragrance. As Lagu Sahab has told very clearly that how the soap and detergents and other personal wash are base is similar, but only the fragrance makes the brand very different. And that I have seen with the working with very closely with the liver, how the liver's products got their unique footprints into the consumer market, like Lifebuoy and Lux are still being remembered from the olden time, and now also they are running quite well. Liril and so many brands like that. Now many agarbattis are there, which are very well known in the not only Indian market but the world market, and so many leading brands are there here, like Sudarshan, and so many Dhoop agarbattis are there. And by visiting them and by talking with them, if anybody wants to have the only marketing aspects, they can cover very well this galaxy of agarbattis by launching their own small shops, or they can do the e-commerce also, e-marketing. So you can start the business with a very small, meager capital, but by knowing the subject more intensely. And for knowing this subject more intensely, we in the FFDC, which is a part of MSMA, organize the training programs of 3 days, 7 days, 1 month, or even 6 months. And for that, more enlightenment will be given to you by our Shuklaji, who is expert in training, and he has come all the way from Kannauj and taken all the pains to bring his entire team. They have the booth, so you can go and discuss with their people who are experts in making agarbatti and giving the training. Unless and until you know how to make it and in a proper way, you will not make the good success. Because when I was doing my chemical engineering, it is a thumb rule that you spend 90% of your time in understanding a business, and then rest of the 10% time you will be only required to run the business. But in India, what we do, if somebody else is doing, we try to copy it. And that is where we spend only 10% in identifying the product line, and then we struggle till we get closed down. And 90% of the time goes into the struggle. That should not be the approach. In agarbatti also the similar things is there. It looks very simple, but you can see some of the leading brands are there, and they have burned their sweat and this whole life to get a big success in the world market. Some of the stalls are there, like one of the stall whom I know very closely. I have been associated with a company called Nikhil Product here, and these people have been in this trade from almost last 40 years, and they are exporting to 70 countries agarbatti.
It looks very simple, but exporting any commodity by specialized making agarbatti in Bangalore market and exporting to 70 countries is not a joke. You cannot export even to the one country single products if it is ordinary things like so. Agarbatti is also known as a brand ambassador of India, and this brand ambassador is known in the world market. Like you go to USA, you go to Europe, you go to Japan or Taiwan or any Southeast Asian countries. There, the agarbattis are respected as a very good media for spreading the fragrance to their gods and goddesses, and of course now for the room freshener also. And here you can see very interestingly, there are some good stalls like I know few of the stalls like S. Mansuklal brothers. So they have got various kind of gums. You see the galaxy of gums which are available. Like commonly people know only that there is a Loban or Google. But Google and Loban is not only one thing. There are so many species like Boswellia serrata, Chamaephora mucul, and then botanically they are very, very different, and the composition is also very different. And on burning, they have multi-ring molecules which on pyrolysis they gives the molecules which are having very good effects on the healing. And now for healing effects, now people are doing lot of research on their fumes. So headspace analysis of the agarbatti is very big target for the future health care through the air care. You saw that whole world suffered in the last 3-4 years due to corona. This time 3 years back we could not able to imagine of going out, and everybody was trapped into their house, and no exhibitions, no business movements. Everybody was trapped into their house, and everybody was a spectacle about taking any breath anywhere outside except their home, and they were trying to sanitize the whole house through either whatever the means available, like through the Dettol or some mosquito repellent or by burning the camphor. Here you can see so many stalls are there who are making so many kind of camphor like Bhimseni Kapoor. So these are different palms actually which gives the real healing effects. Bhimseni Kapoor is not ordinary Kapoor. Even there are so many varieties in the Kapoor, unless and until you know properly the chemistry behind it or the psychological impact of those camphor which gives on their healing of the human behavior, you will not get benefit. Synthetic camphor is dextrolivo-rotatory type, but you have got the natural camphor which comes from the camphor tree, which is decamphor, and decamphor is totally healing. So it is one of the biggest tools for the aromatherapy. Many of the mountaineers I've seen in these days for beginning of now our in Uttarakhand Char Dham Yatra, many people have the breathing problems when they go on the high altitude or if they go to Amarnath. So what they do actually in those many shops down below, they are having eucalyptus oil or eucalyptol, to be very precisely, very concentrated eucalyptol or kapoor, which is sold by many vendors now, and the people take to Amarnath and Badrinath or Kedarnath, and they keep on healing when they feel like they have the breathing problems. So that really heals them. And when there the oxygen is limited, because these are all oxygenated molecules, and what kind of therapeutic impact they create on the human mind and human body, I am not a doctor, but we have seen that the people get very relaxed when they take small kind of first aid kit in the form of a healing device like this Bhimseni Kapoor or some small bottle of eucalyptol or menthol, such kind of things. And when they go to the Badrinath Kedarnath, now crores of yatris are going, and these yatris are practically carrying with them small kit which we also try to offer through our stores.
and here we have the booth also. So we can show them if you come to our visit to our booth actually. Such kind of devices are really very powerful. So nose is one tool uh, out of five senses, which is most powerful tool, and that corona has shown us very clearly that whatever you eat, but if you smell something wrong, any virus goes into your nose, and if it goes to your mind and sit in the lungs, it can kill you. Whereas if some positive aura goes into your body, it can heal you also. So two contradictions are there, whereby one positive aura can be through either agarbatti or through the diffusers or through the evaporating devices, through the lamps, simple lamps. Nowadays, many people, many places, many restaurants, when you visit, you will see that such kind of healing lamps are available. And these are very ancient tradition, but now it is in the more convenient form whereby electrical bulb is being burned there down below, and you are putting some essential oils on the water top kept in the dish, and some essential oil if you put, it keeps on evaporating and it heals you and create the positive atmosphere. You can see in this entire exhibition hall, which is almost covered with more than 1 lakh square feet of the exhibit area, the atmosphere is very positive, and so many people are having very good energetic level, and they are moving across so many stalls doing the business transactions also, and they have good time, and I am very much hopeful for next 2 days they will be having a very good knowledge, as well as they will having very good business through the agarbatti or through many healing devices. And so many good speakers in these sessions are being included, like our Sitaramji Dikshit is there, who will be covering very much enough on a new innovative house care products. He has been having a huge experience of working with top multinational company, right from Hindustan Lever to Tata Oil Mill and in the IFF and so on and so forth. When you listen from him, you will get a real insight how this home care atmosphere, if you create inside your house in a positive way, then you can really heal yourself. Suppose if you are having a house whereby some fouling odor is coming, suppose next to your house there is a pesticide plants or something like a very obnoxious chemical odor is coming, you are bound to get sick. Whereas if you have some very good parijat plant or jasmine plant next to your window, then you will be getting throughout the night very nice smell coming from the nature. And our ancient literature very well describes which plant should be planted in our courtyard or campus. Although in city like Mumbai we don't have the liberty of planting so many trees as a bungalow, but throughout the country we can have very good plantations, and we can keep very good atmosphere throughout the area. Now we started in Aroma Mission one project called Purple Revolution. So I am sharing some of my practical experience of some commercial implementation which we are doing in the state of Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, whereby on the roadside which are being made as a part of infrastructure throughout the country, with the Jojila tunnel to Atal tunnel, so many tunnels takes away us to the very high altitude, and there the plantation of lavender, clary sage and saffron and so on so forth, so many purple kind of flowers which grows very well into the icy atmosphere, like altitude of 2000 above, or ideal range can be 3000 meters. So if plantation is done in those areas, we can get very good amount of flowers, as well as we can distill the oil from that, and also make good nice agarbattis from the spent powders also after distilling. So such kind of projects are going in a very big way.
with the support of Ministry of Science and Technology through the CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, which is implementing its program through the CSIR lab called Triple IM, Indian Institute of Integrative Medicine in Jammu and Kashmir and Lahore and Spiti as well as in Leh Ladakh. So such kind of projects are very well thought process which are being implemented for the air care business, because air care is very important. It cannot be underestimated. As I told you again and again that how the corona become a killer disease in last 3 years, which we saw very clearly. So we cannot create huge pollutions. That pollution was understood, but the healing molecule creation is a more important things for our future India, which requires healthy India. And for that, nice agarbattis, nice diffusers, and nice smell in the nearby vicinity is very important. So such kind of many programs are being implemented through many of the Department of Biotechnology mission also, whereby states like Bundelkhand have been identified as an area whereby lot of poverty was there, and many of the farmers were not getting enough income by growing the common conventional crops. So they have been introduced with the help of our three CSIR institutes like CMAP, Triple IM, and also FFDC, which is part of MSMA. So enough plantation has taken place in this area, and these plantations enhance the level of income for the farmers, which is the main criteria for our Prime Minister's future vision of doubling the income of farmer. And these crops are intercropped with so many horticulture crops also, like many fruits are grown for giving the good health and nutrition, and also these aromatic crops are grown for giving the whole healing effect. As I discussed little bit, more and more things will be discussed by Sri Suklaji in his lecture on aromacology, aromatherapy, and so on and so forth. But this subject cannot be underestimated. The education is very much important need of this business, and this our country needs the very good education, and for that FFDC is doing earmark work, and they are extending not only the Zoom meeting training, but they are also conducting the practical staying courses in city of Kannauj, where the so many youngsters who are doing many startups, almost 3 to 5,000 students are being trained every year, and the capacity will be expanded with their new only upcoming campus. So I think this kind of steps by Government of India through MSME, through Ministry of Science and Technology are a very nice enlightening attempt which will create not only micro, small and medium enterprise, and many successful these micro companies have now become into the small enterprise, and which will turn into medium and large enterprise, and also will export. So we will be a net export gainer of forex, and creating the good name for our country, because our country was known as a Sone ki Chidiya. But this was the benefit of our country, that we have on the same day very hot temperature, like as high as 40 degree in the extreme south. Now in Mumbai city, you have at least a little bit better temperature of 30 degree average. But in the mountain side, if you go towards the Chardham Yatra and other places like Amarnath, there the minus temperature you can also see. So we can grow many things, right from the very cold climate to the coastal climates. Now in Gujarat, for example, salty lands are enough on the coastal part, and that has enabled many of the venture on the sea coastline, which Gujarat has to offer very big coastline in the area of Kutch, Jamnagar,
Bhavnagar and these areas. And many people started cultivating Pamarusa in that area. And it is a very successful, and almost few hundred tons of Pamarusa is coming from that area alone. And this kind of things have really enhanced the economic upliftment of many farmers in that area, which were, unutilized so far. So such kind of crops like lemongrass, citronella, pamarusa, eucalyptus, citrodora. Citrodora is very well utilized for repelling the mosquitoes, natural mosquito repellents. So citrodora contains a molecule called citronellal, which is used for making the paramenthin diol. And paramenthin diol is a very big mosquito repellent, which is a part of our citronella oil. And citronella oil has been used for mosquito repellency. Many people try to use synthetic pyrethroids for the mosquito repellency, but it is a very carcinogenic pesticide which has very harmful effects on the nervous systems in the human body. So now many companies are now very particular to use natural insect repellent like PMD in their formulations, and big companies like Godrej, which were making the mosquito repellents, now they are making with the natural because they seen the side effects of the synthetic pyrethroids. So here in this whole exhibition complex, instead of I giving you the lot of theory, you can have visualize visits to many of the stalls and experience yourself, interact more with the stall owners and ask them, they are masters of their area and they will give you more insights into their products and how you can make your wellness very important in your life, because wellness is now very much talked of the life after this corona has happened. Many people suffered and they practically not only lost their health, but also many of the people even lost their life also due to the this wrong virus which came into our atmosphere. In the ancient time, we have been doing yagna in our ancient India, and there was not even any kind of such kind of viral disease. But now, why these viral diseases are coming in this last couple of decades, or not couple of decades, even in last 3 years, the whole world become very much alert. But the solution lies in country like India, which have a lot of tradition of thousands of years of tested and tried technology in the form of conventional habits into the day-to-day life. And I think this Incense Media has organized a very nice show whereby they are giving you the opportunity to understand and start up the ventures if you have not started. But anybody who has started, there are so many opportunity to grow this business, because wellness is the biggest business as on today, which is having the highest growth rate in the not only India but worldwide. So by having the exposure to such kind of trade fairs, you can not only get lot of ideas, and if you feel any time interacting with me, I am available throughout the 2 next days, means today as well as tomorrow. You can note down my number also and make me WhatsApps, because I hardly attend the phone call. So give me your introduction and then give me your question, and I will try to interact, and probably in next 2 days I am here, so we can interact with each other, and we can try to solve the problems of if anyone has there. And also on 8th, 9th and 10th and 11th and 12th, we have arranged a trip to Dapoli. If anybody is interested, actually, I can give you the number of contact person, one from Incense Media as well as one from our side. Madam Neha is organizing a whole tour for next 3 days, next 4 days from 8th onward.
So you can visit Konkan actually. There we have done all the plantations of all these crops. So these crops are being distilled over there, and so many crops which I talked about in brief, because I didn't discuss too much because time is limited here. I have been allocated something like 30 to 40-minute maximum with the question answer session. So I will try to stick to my schedule, and already it is 1:30. So I will not take too much time and try to give you 5-10 minutes, so that if any pertaining question is there, you please don't hesitate to ask me any questions, and I will try to answer so that it can benefit the whole audience who are gathered here in this auditorium. And thank you very much to everyone for listening very carefully. Although audience quantity is limited, but quality is more important than the quantity. And only one leader comes and they add many zeros. So we become 1 to 10 to 100 to 1 billion and more. But we have to take care of more than 1 billion people. So leaders never come in the form of a masses. They come in the form of a classes. So you please become a leader and try to ask any question if you have. Now it is 1:30 already. So maybe 10 minutes more is there. And after me, there is another speaker. So I will not take too much time. Thank you very much. So any question, please don't hesitate to ask. Huh? ये एक सेकंड आप आ जाइए. आपने स्पेंट जेरेनियम पाउडर के बारे में बताया, ये कहाँ मिलेगा और क्या रेट में मिलेगा? हेलो चेक. हाँ, जेरेनियम पाउडर का आपका बहुत सही पर्टेनिंग क्वेश्चन है. जेरेनियम पाउडर अभी इतना जनरेट हो रहा है कि हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं. यहाँ पे ड्राई पाउडर मेरे पास हमारे निशांत एरोमा के नाम से स्टॉल है आगे फ्रंट में. आप वहाँ पे आइए, मैं आपको सैंपल भी दे दूँगा और उसके रेट के बारे में भी मैं डिस्कस करके बता दूँगा. उसमें अलग अलग मैश साइज़ होती है, तो मैश के साइज़ के ऊपर रेट भी डिटरमिन होती है और मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर भी. अगर आप क्रूड फॉर्म में लेंगे तो बहुत सस्ता अवेलेबल हो जाएगा, आप अपने यहाँ पे ही पिसवाई करा लीजिए. और अगर आप एकदम फाइन फॉर्म में लेना चाहेंगे, हमारे यहाँ पे पिसवाई की खर्चा ज़्यादा आएगा, तो वो डेफिनेटली महंगा पड़ेगा. और लेकिन ये इसकी उपलब्धता बहुत अधिक है. अभी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ टन जेरेनियम हो रहा है और 1 किलो जेरेनियम के पीछे करीब करीब 1 किलो जेरेनियम के पीछे 20 किलो पाउडर सूखा, एकदम 100% ड्राई सूखा पाउडर जेरेनियम का उपलब्ध हो जाता है. और अभी करीब करीब 100 टन जेरेनियम होने लग गया है. अगर 100 टन को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप अंदाज लगा दीजिए कितना, 2000 टन के ऊपर जेरेनियम पाउडर भारत में इस समय में उपलब्ध है. और कुछ लोग उसकी अच्छी अगरबत्ती बना रहे हैं. तो बहुत सारों की ये एक आदत रहती है कि वो उसको सीक्रेट रखते हैं, वो किसी को बताएंगे नहीं कि भाई मैं जेरेनियम पाउडर यूज़ कर रहा हूँ और मैं उससे एकदम सक्सेसफुल रोज़ अगरबत्ती बना रहा हूँ. लेकिन वो सक्सेस है. और हम लोगों ने खुद ने बना के देखी, उसकी धूप बना के देखी, उसमें ओलिवेनम डाल दिया, मतलब लोबान या रेजोनाइड गूगल डाल दिया, और उससे बहुत अच्छी नेचुरल 100% जिस पे आप दावा कर सकते हो कि आपकी जेरेनियम की अगरबत्ती 100% विदाउट डीईपी धूप बनी हुई है. धूप की मशीनें यहाँ पे बहुत है. 50,000 से लेके 1 लाख रुपए में तो आलीशान प्लांट आपके इधर लग जाता है. और अगरबत्ती इंडस्ट्री का वो मॉडल जो हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, जो शुक्ला जी और अभी जो हमारे अमित कुमार जी CEO KVIC के आए थे कि भाई ऊपर मकान, नीचे दुकान और पीछे अगर कारखाना रहेगा ना, वो कोई बंद नहीं कर पाएगा अगरबत्ती का. और बड़ी ब्रांड्स मैं आपको बताता हूँ आगे के समय में वो इनके सामने छोटी हो जाएगी. अगर ऐसी दुकानें और ऐसे मकान अगर 1 लाख खुल गए ना, पूरे भारत का स्वास्थ्य सुधार देगा. और हमारे यहाँ पे एसेंशियल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे एरोमा मिशन के प्रणेता जिसे हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं,
नरेंद्र मोदी जी, वो सन 2002 में मुझसे मुलाकात हुई थी। तब उनका ये विजन था, एफएफडीसी के माध्यम से उन्होंने जो ट्राइबल एरिया के डांग क्षेत्र में और काफ़ी 5 बड़े क्लस्टर स्टार्ट किए थे, और वहाँ पे ये पांचों एरोमेटिक क्रॉप्स लगा के जो गरीब आदिवासी थे उनको ये एरोमेटिक का कल्चर उन्होंने 7 दिन में, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला स्टेप उन्होंने, यहाँ के गुजरात के ट्राइबल कमिश्नर थे रामजी राय करके, उनके माध्यम से एफएफडीसी के माध्यम से उन्होंने 5 बड़े बड़े क्लस्टर चालू किए थे। अभी वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। जैसे वापी, धर्मपुर, इन एरियाओं में पहले जगह बहुत सस्ती थी, लेकिन आज वहाँ पे ट्राइबल नहीं रहता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है, तो अभी वहाँ पे संभव नहीं है। लेकिन ट्राइबल एरिया तो हमारे यहाँ पे बहुत पड़ी है। जैसे आप अभी देखिए, वो जहाँ पे आता है ये नक्सलवाद वगैरह चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी खेतियाँ की जा रही है, और एरोमा मिशन के माध्यम से या डीबीटी के अन्य प्रोजेक्टों के मिशन के माध्यम से भारत सरकार का ये अप्रोच है। तो जेरेनियम के प्रश्न पे मैं आपको बताता हूँ, जेरेनियम की क्रॉप सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, उसमें कोई जानवर खाता नहीं है, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। अगर आप मेरे साथ में दापोली की विजिट पे जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हो हमारे पास ऐसे भी जगह है जिनको हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। वहाँ पे हाईवे आ रहे हैं और वहाँ पे समुद्री हाईवे बन रहे हैं, जो गडकरी जी हमारे नई योजनाओं लेके यहाँ से सी ब्रिज बना रहे हैं। तो वो पूरी एरिया जो जंगलात के रूप में जानी जाती थी, मतलब उजड़ गए थे कोंकण, वहाँ पे ये सारी एरोमेटिक क्रॉप्स लग रही है। और एरोमेटिक क्रॉप्स के साथ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी लग रही है, जैसे आम, केसर आम, जो सीज़न चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि 8 तारीख को हम लोग ले जाएंगे वहाँ के मैंगो, वर्ल्ड फेमस है, जेरेनियम उसके नीचे हो रहा है। तो मैंगो का पैसा तो मैंगो का पैसा मिला, साथ में जेरेनियम का पैसा मिला, और जेरेनियम में से तेल निकाल लिया, और उसके हाइड्रोसॉल से ये पूरा मॉस्किटो रिप्लेंट और ये सब स्प्रे बना लिए जो वाटर बेस्ड है। लेकिन उसका पाउडर पे मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे, वो बहुत ही सस्ती दर में आसानी से, और जितनी चाहे क्वांटिटी, 1000 टन मैं अकेला दे सकता हूँ। ये रोज के लिए, रोज अगरबत्ती बनाने एकदम आइडियल है। अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखो और इसका नाम भी समझो, तो इसका बोटानिकल नाम है पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस, लेकिन इसको रोज सेंटेड जेरेनियम कहा जाता है। और अगर आप इसके बुखुर बनाओगे या जो भी चीज़ बनाओगे, जो सूखा पाउडर है, इधर बहुत सारी स्टॉलें हैं, तो जेरेनियम पाउडर आपको किसी को देखने नहीं मिलेगा। आप वुड पाउडर डालोगे, वुड में कोई स्मेल नहीं है। स्मेल नहीं है। अगर सैंडल पाउडर डालोगे तो स्मेल आएगी बर्निंग पे। वैसे ही जेरेनियम के अंदर से आपको गुलाबी स्मेल आएगी पक्की। जैसे गुलाब का तेल निकालने के बाद या गुलाब जल निकालने के बाद में, शुक्ला जी के संस्थान में जो हमने एकत्र मेला आयोजित किया था एफएफडीसी एवं दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से दिल्ली में, तो वहाँ पे ये एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया कि किस प्रकार से गुलाब का तेल निकालने के बाद जो उसका पाउडर बच जाता है, जो स्पेंट मटेरियल रहता है, उसको पाउडर करके उससे गुलाब की अगरबत्ती बनाओ तो उसमें गुलाबी नेचुरल कलर भी आता है और उसमें जलने पे गुलाबी खुशबू भी आती है। क्यों शुक्ला जी, सही है ना? तो ऐसे टाइप की ट्रेनिंग शुक्ला जी के संस्थान में यहाँ पे एफएफडीसी पे आपको ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल साल भर का मिल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर करना चाहिए, और अगर समय नहीं है तो आप जूम मीटिंग के ऊपर भी 3 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको देखो कमर्शियल जानकारी देने के लिए मैं हूँ, लेकिन फिर भी इनके पास जो फैसिलिटी है दिखाने के लिए, समझाने के लिए, गुलाब जल बनाने के लिए, वो अद्वितीय है। और 1 साल का एफर्ट नहीं है, भारत सरकार ने उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो चाहते हैं कि इससे लोग लाभ लें, लेकिन लाभ लेना अपने हाथ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हम शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ 15 केमिकल हाँ जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, हाँ। उनसे हमें अगरबत्ती कंपाउंड बनाना कब सिखाएंगे? शुक्ला जी का लेक्चर जब होगा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत सहज रूप में से शुक्ला जी सिखा देंगे। और शुक्ला जी का जो कैप्सूल होता है ना, आधी घंटे आपको बैठेंगे, लेकिन इनको कम से कम भी 25 साल लगा है बनाने में। वो मतलब वो अमृत मंथन है।
कि समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का घड़ा छोटा सा निकला था। तो ऐसी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें हाँ, तो शुक्ला जी आपको वो FFDC में। ट्रेनिंग भी 3 दिन की, आपको केवल आधे घंटे में आपको अमृत पिला जाएंगे। हमको 15 ही केमिकल चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, नए हैं, नहीं नहीं, अगरबत्ती जरूर जी। बनाने वाले हैं, बहुत सारा नॉलेज नहीं है, पर 15 कॉमन केमिकल जो कि इसी के लिए मार्केट में देखिए, ऐसे आयोजन अवेलेबल में हो। शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करी ना, तो शुक्ला जी और अपनी उनकी पूरी टीम, क्योंकि शुक्ला जी का अकेले का काम नहीं है, शुक्ला जी हमारे साथ में थिएटर में इधर ही बैठेंगे, लेकिन शुक्ला जी की पूरी टीम वहाँ पे इनका जो बूथ है उसमें पूरी लगी हुई है काम पे, और सारी समझा रही है, दिखा रही है, लोगों को मार्गदर्शन दे रही है पूरा। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को प्रश्न कोई हो, जिज्ञासा हो तो प्लीज पूछो। हाँ जी। नहीं, तो ठीक है, बस मेरे को लगता है समय का अभी हो भी गया और लंच टाइम भी नज़दीक है, तो मैं यहाँ पे मेरी अपने वाणी को विराम दूंगा और चाहूँगा कि आप लोग भी सब अपना भोजन पान करो, और साथ साथ में उसके बाद में मेरे पास में सेशंस का भी क्या शेड्यूल है वो आगे के यहाँ के आए। हाँ, 2 बजे से है ना, तो ठीक है, अभी आई थिंक आधी घंटे का समय है हमारे पास, या 20 मिनट का समय है, तो भोजन करके उसके बाद में सेशन चालू करेंगे। धन्यवाद।
coming all the way from our first speaker is Rishabh Bhai, and he has come all the way from Calcutta, and he is our president of PAPAI also, which is the largest organization in the country for Fragrance and Flavor Association. So he has a rich experience and very young and energetic, and he will speak in his presentation. Is a very good experience. He is a second generation. His father I know, Chandrakant Bhai Kothari. So he will speak and give his very good insight. Last few months back we arranged a very big event in Calcutta came, and it was a great show, very good exhibition, and I think that same reflection is being reflected here in this exhibition. But now when you will listen him, you will get lot of more ideas, new ideas about the business, because he has been representing our association at the not only national level but international level also, and the association of PAPAI, Fragrance Flavor Association, got now uh, one of the largest membership in the world, because India is number one in the fragrance and flavor uh, uh, for many dimensions, cultivation to extraction to use to import. In every segments we are quite big. So now since camera is on, so I can request Rishabh Bhai to start with his presentation without wasting and taking too much time with you. All right, ladies and gentlemen. So yes, sir, as rightly described by sir, that we have amongst us the second generation who is quite knowledgeable, and he is going to provide you with all the insights, all the minute details about the applications, about the importance of fragrances in our lives, that how fragrance can uplift your mood and many things. So yes, ladies and gentlemen, he is also the president of FAFI and CEO of CKC Fragrances. Everybody put your hands together and welcome on stage Mr. Rishabh Kothari. Can we have a huge round of applause? Good afternoon, everyone. Am I audible? I use this. Good afternoon, everyone. And I have an unenviable task of having a session just after lunch. So if anybody is dozing off at the back, I will totally understand. If I was in your place, maybe I would also be in a similar situation. Uh, I have a presentation. I'm hoping they will be able to fix very soon. But before I start with my presentation, I'll just give you all a background of what it is all about. We are in an expo which is primarily aimed at the agarbatti industry. And of course, we also have soaps and detergents. And when I speak, I'm a perfumer, I'm from a perfume house. And when I speak to people, uh, the most common question that I face is Naya kya trend hai? People want to know what new is happening, what is going to be catching on. Everybody wants to catch the trend early. I think that is the normal thought process that most manufacturers have, that how do I create the next big brand? Now, I mean, we all from the same fraternity, but I will avoid taking names of agarbatti brands for the simple reason that I do not want to specifically mention anyone. So even in my presentation, I have used examples from the perfumery world, from the fine fragrances and other applications. Because what I'm trying to say is more to illustrate a point than to give any insight. But once we understand how we are able to identify a trend, we can pick it up anyway, anyhow. नहीं हो रहा है क्या? So as I was saying, so basically there will be analogies in my presentation about catching perfumery trends. I do hope that it will be of some value to all of you in terms of understanding how trends can be captured. Just give us a couple of minutes while the technical team is able to fix the presentation. They're having some challenges.
While the technical team fixes this, I have a quick question for everyone, just for my understanding. How many of you all are directly related to the agarbatti trade in terms of manufacturing? Can you raise your hands? How many agarbatti manufacturers? Great, okay. And the others are all into what? Distribution of agarbattis, trading? Okay. Pardon? Trading. Any other fields in this audience? Anything else I should be touching which may or may not be a part of my presentation? The people there, I did not see their hands up for anything. So unless you're here because there is no place to sit in the rest of the hall, you're welcome to be here and do clap at the end of it. That's good enough. But let's wait for the presentation to take place. Everybody's comfortable with English? Or should I try to speak a bit in Hindi also? English is fine? Great, thank you. It's Murphy's law that everything that you do not expect to go wrong will go wrong. So we have a situation here where everything was smooth till now, and now for a small technical glitch, but I'm sure they will be able to fix it very, very quickly. Yeah. Just bear with us for a couple of minutes. I'm sure it's going to get fixed very, very quickly. I will flatter myself by saying all good things take some time. So please kindly bear with us. The pen drive I have given. I have given a pen drive with my presentation. So as I said, all things take some time. Hopefully by the end of it will be good. So I'll not waste time. Can we go to the next slide, please? Can we go to the next slide, please? What's happening? आपने PPT खोला PDF खोला नेक्स्ट करिए यहाँ पे कर लीजिए ना इसको क्लिक कर सकते हैं नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे क्लिक करो खूब अच्छा चला है लागू साहब का प्रेजेंटेशन तो चलाया था ना उन्होंने सर कैन यू कंटिन्यू विदाउट द प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल काम है चलो बहुत मुश्किल नहीं वो नहीं सर आप ये बोल इम्पैक्ट नहीं आएगा सर वो मैं जो रेफर कर रहा हूँ वो समझेगा कुछ फोटो है कुछ चीजें वो बहुत मुश्किल काम होगा नहीं तो सर ये दिक्कत क्या आ रही है लागू साहब वाला तो चलाया था ना अब क्या दिक्कत आई है
अभी तो आ गया था ना अपना फर्स्ट एक स्क्रीन आएगा तो दूसरा क्यों नहीं दूसरा आएगा? क्यों नहीं आएगा? एक स्क्रीन तो अभी अभी वही तो देख रहा हूँ नहीं, सुबह लागू साहब ने पूरा पीपीटी दिखाया, चला पूरा। अभी एक स्क्रीन चालू हो गया था। अभी तो दिख रहा था, पहले वाले स्लाइड तो आपकी दिखी थी। वापस कर दी। बिजी है क्या इसमें? तो बिजी पे चला देते हैं। नहीं बॉस आपने नहीं आपने दिया नहीं। Ladies and gentlemen, so be seated. There is some technical glitch. We're trying to fix it, and so we'll be back to present you the benefits, the uses, and all the inside details that you need to know about fragrances. So be seated, be right here, and this technical issue will be taken care in the next 2 minutes. Thank you. All right, ladies and gentlemen, can we please put your hands together once again? And we have Sir taking it over. Yeah. Thank you everyone. As a people familiar with the old Doordarshan tagline, "रुकावट के लिए खेद है," but hopefully we will not have any problems anymore. So quickly to my presentation. As I mentioned, as a perfumer, the question that I'm asked most by most agarbatti manufacturers is talking about trends.
नया क्या होने वाला है. Nobody is interested in what happened yesterday. Nobody is even interested in what is happening today because it's already almost the past. Everybody wants to know what is the next new trend. Everybody wants to know how to catch on to the next new product that they want to do. So how do we identify trends? I have already given the caveat that we are not going to be talking about agarbatti brands for very obvious reasons. A whole lot of agarbatti manufacturers are very close friends, and I definitely do not want to offend one over the other by talking about specifically agarbatti brands. But hopefully by the end of the presentation, using the examples I have given, you will be able to take back some insight on how to identify trends. Next slide, please. So friends, is understanding trends some kind of crystal gazing, or is there more science, more substance to it? Because I think a lot of us approach trends almost like it would be a game of dice. बॉस ये चलेगा, आजकल ये चलता है, किसी का एक टाइप का प्रोडक्ट चलता है. ओके, आई विल से समथिंग विच आई शुड नॉट बी सेइंग इट, बट एक किसी का पाइनएप्पल चलता है तो सब लोग पूरा फ्रूट सैलेड बना देते हैं. That's the whole challenge that we have. That's how we think we know trends. That is how we understand trends. Or it is some esoteric crystal gazing of trying to understand what is the next big item that's going to happen. Next slide, please. So let's understand what actually drives consumer behavior. I think if we understand consumer behavior, to identify a trend is very easy because you know the big buckets in which you want to function, and you know how you're going to how you want to move forward in terms of the kind of products that you want to work with. There is a simple mantra which, according to me, is the essential driver for consumer behavior or consumer demand. It's a simple 4-letter word: feel good or do good. Look at every category of product that we are ever going to be working in. When a person consumes a product, and this is not restricted to agarbatti, what are we talking about? We are consuming a product because of a necessity, and when we come into products like agarbattis, you either want to feel good about using something or you want to do good about it. Think about every possible scenario that is there, and you will be able to club it into these two basic ideologies because of which we are consuming products. Next slide, please. Now, when we talk about feel good or do good, let me just run you through basically about what we are talking about. What do we mean by feel good? When we talk about feel good, of course, the slide says scents that help lift or enhance their opinion or their mood, or bring back memories of happy times, places, and experiences. This is fairly self-explanatory. I don't think I need to explain this to anyone. Think of when you are trying to smell. Now, I'm going to be talking specifically in parlance of perfumery or agarbatti. Does your agarbatti bring back certain memories to your customer? Or does your agarbatti create or enhance a new emotion in a customer? I think this is the most important role that a fragrance can play. For example, if I am taking my agarbatti into the puja ghar, is it adding to my feeling of devotion? Do I feel absolutely divine when I smell something? Am I engulfed with a feeling of reverence for the Lord when I smell that, when I burn that agarbatti? It's about creating a feeling. If that feeling works, and if you are sure about what is the target market for that feeling. Now, if for example, if I'm making an agarbatti which is very modern, very ultra, I want people to use it in their homes for casual occasions, not for worship. Would I still use the same fragrances? A lot of times we launch products without understanding the nuances in terms of who is our target market. What is the target usage of that product? Where are we expecting the customer to use this product? If it's a puja ghar product, it should be working on a different set of emotions. But today, more and more people are using incense sticks, agarbattis for all kinds of occasions. And we definitely want to encourage that. So are my agarbatti fragrances, are my fragrance choices reflecting on the kind of environments and use cases that I want my customers to use? For example, we are all familiar with, see, if I was an agarbatti manufacturer, we are all familiar with, say, in a spa, everybody uses scented candles. Can I replace the scented candle with a more cost-effective solution for the spa owner with a agarbatti which enhances the mood in a spa? Just a use case.
So it is about feel good. Unless the customer feels good about the product, he's not going to buy the product. And if he's not buying the product, definitely there's no trend. Next slide, please. Similarly, we talk about do good. Now here I've given this example called functional fragrance by the new cow. I don't know how many of you are familiar with this. Is anybody here familiar with this fragrance? So it's a very interesting concept here. Nuco is a European company which has launched this product called the functional fragrance. The interesting part of this fragrance is that it claims that when you use this product, it not only enhances certain things, it improves your health also. Now this is a claim backed by certain scientific studies. So while we talk about feel good, there is an additional aspect in a fine fragrance. Till now we know people used to use fine fragrances for use cases where we want to smell good when you're stepping out. But when we think of a fine fragrance which is going to help me enhance my health and yet be good, how do we create a new use function? Next slide, please. So, next slide, please. So, the three, when we talk about agarbattis, the top three things which, in my humble opinion, the customer is going to be looking at as a trend would be, first is natural. Whether the product is natural or not, but post-COVID, people are happy to consume what they perceive as natural products. They want to use products which do good to them, which are not harmful to them. Can we capitalize on this so-called natural trend when we talk about agarbattis? The next is value. This is one term I think all agarbatti manufacturers know very, very well. Value for money. I don't think this needs any explanation. Without value for money, nothing is going to sell. And the third, of course, is the new concern, which is environment friendly. All the buzzwords like low carbon footprint, all these things can be all bucketed into one big bucket, which is environment friendly. So I think these are the three things that the consumer is looking for. And how do we capitalize on these three needs? Next slide, please. So if we look into the crystal ball and look into what kind of trends can work, of course, first is, of course, the eco trend, which is ecologically sustainable, good products, things like that. What is good ecologically? Next is well-being ingredients. Can we create a agarbatti which says if you inhale its fumes, it will take care of chest congestion? I don't know. If agarbatti fumes can take care of mosquitoes, which it was not happening less than a decade back, why can't it add some positive well-being factors? Trust me, there are products out there which I will showcase, which claim these things in some other way. Next is sustainable ingredients. Now, it may appear that Indian consumer is not so interested in sustainable ingredients, but eventually he or she is going to be. So can we claim that we are using sustainable ingredients, and that is why please pick up my product rather than somebody else's product? Your product has to shout out in a very, very crowded marketplace. So what are those buzzwords? What are those trends that we can pick up to use them as our USP to create a market share for us? And the fourth is, of course, technological interplay. Now this technological interplay can be in fragrances, it can be in your packaging, it can be in something else. I will showcase a very interesting technological interplay which has been used in fine fragrances, for example. I was very surprised to see some agarbatti packets where LED lights are a part of the packet, for example. Now that's one interesting use of technology. Now, some of them may appeal to the customer, some may not. Some may just become a fad, some may not even sustain a fad. But question is, are we using so-called technological products to enhance our market share? Next slide, please. So of course, eco-trend is again self-explanatory. Go green, save the earth. We are using recycled packaging. We are using products which have low carbon footprint. This is not tested on animals. It is cruelty-free. You can use all kinds of trends to say that, dear consumer, please pick up my product and not somebody else's. Next slide, please. Now, well-being ingredients. Now, this is the product I was talking about. This is a product called, again, this very innovative company, new. It's called Foreign Lung.
Forest Lungs. This perfume claims that if you put this perfume on yourself, perfume mind you, this is not a well-being product. There is an additional benefit that it clears your lungs. It is good for your lungs. That's why the name Forest Lungs. Their fragrance, their packaging, everything reflects on this whole idea of well-being. At a time when consumers don't want to use synthetic products, don't want to use products, and think of it this way, during COVID when people were scared of what they were inhaling, what they were smelling, you get a product which says, use me, and it will also help you in clearing your lungs. I'm not suggesting that that would necessarily be something appealing, may not be appealing, but somebody is thinking out of the box. And to stand out over a crowded marketplace, we have to think out of the box. If we want to create the next trend, if we want to create the next pineapple rather than make a fruit salad, we will have to think out of the box. Next slide, please. Sustainable ingredients. Now this is something, this is a site very common to all of you involved in the agarbatti trade, using recycled flowers. This is perhaps the only example from this trade that I'm giving, but it's very relevant. I do not know how much of it is used, how much of it is not. A lot of people tell me it's a marketing gimmick. I have no personal view on this, but end of the day, people who know about it also know that this so-called gimmick works. Today, a lot of consumers are happy to pick up products which are recycled because they are coming from temple flowers. There is an element of recycling and there is an element of holiness when you use temple flowers to use your agarbatti. A trend which has already picked up, can be modified, can be grown, can be adapted depending on how you want to work on your product. The next slide, please. Technological interplay, very interesting. We are all familiar with the company Paco Rabanne. This is their product called the robot. This product dispenses fragrances electronically. From the packaging to the way the product is dispensed, the way the product is used, there is a huge technological component that the company has interpreted. Now, somebody may feel this is an overkill. Somebody may feel, do I really need it? But then there are enough curious people wanting to try new products. There are enough people wanting to use a new product. And who knows, today's delivery mechanism, which looks like an overkill or which looks like just an innovation, may become the standard in a decade or so. So, coming back to what I was talking about, the 4 trends: go green, save the ecology, use recycled products, use products which enhance well-being or at least give the feeling of well-being, and of course use technological interplay. These can be used in the entire cycle of our products. It could be in the product design. You can always showcase your lab and say, see, we are not using any mice, there is no cruelty to animals. You can showcase in your manufacturing process saying, oh, we are using 100% of the water we use, we do not waste water, we do not do this, there is 0% effluent treatment that is happening. You can use that in your packaging. You can use that in your product creation. The ball is in our court. What is the story we want to give? It is in our court, what is the story we want to narrate? All those who are into marketing here know for a fact that what differentiates our product from somebody else. It is the story, that the messaging that we want to convey. Why when you say forest, you will not have a blue packet? When you say forest, you will typically have a green packet because you are trying to convey a story. When you say this is ocean bliss, you're going to have a packaging which reflects that color. You're going to have a fragrance which reflects that. Ocean bliss, you're not going to have a rose fragrance in ocean bliss, for example. The entire marketing exercise is narrating a story. The entire marketing exercise is basically giving a concept, selling an idea to the consumer, and hoping like hell that he or she will pick it up. That's what marketeers do. That is what trends are. If we look at agarbattis, again without mentioning specific agarbattis, even if we identify the so-called trends in the last 1 decade, really if you examine those fragrances individually, were they really trends? I don't think so. There was no market intelligence which said this is going to happen,
this is happening, and there is no intelligence which says just because customers like a fruity fragrance and have picked up a pineapple, they're going to pick up a banana or a cherry. Same applies to floral fragrances, same applies to the so-called French fragrances. People are copying fine fragrances. People want to buy an experience. People want to buy into a story. People want to buy into a message which you are able to convey. It could be your packaging, it could be your fragrance, it could be your poster, it could be the actress who says, when I burn this, I feel pious, I feel holy, whatever message. Now, the challenge, of course, is a lot of times as marketeers, we are convinced about a story. We have that story in our head. When we see a package, we look at, oh, this is the forest, this is purity, this is green. Does the customer also see it? Does the customer see it with our eyes? A smarter thing would be for us to look at it from the customer's eyes. So basically, this is my submission to all of you. Next slide, please. My submission to all of you in terms of how we can catch trends. These are the trends. Nobody really knows. As this slide indicates, there are so many ideas. Ideas which will always excite us. We really do not know which is the next big idea which is going to really get into the market. But there is a science to it. There is a thought process to it. If we follow that, if we try to follow some kind of logic instead of just basing it on a gut feeling, नहीं नहीं यार आजकल यही चलता है और आपको नहीं पता हमारा जो कस्टमर है ना उसको पता नहीं है उसको यही समझ में आता है. There are so many preconceived notions. And let us remember, it is the person who breaks that preconceived notion who is able to create a trend. Otherwise, we will all be following trends where because one rose works, everybody is launching a rose. One musk works, so everybody is launching a musk. And there is nothing wrong with it. I also want to leave this with a caveat because understanding trends also means understanding consumer preferences. If all the consumers really want to go left, I don't think there is any heroism in trying to go right. I mean, how many of you are familiar with a very old genealogy which used to be published by a company called Harman and Reimer, the HNR genealogy? Those people who have some silver hair here in the audience will know about it. It was a very interesting graph. What they had done was, from first all fragrances, this is of course for fine fragrances. Fine fragrances were divided into masculine and feminine, and then they divided them into bigger groups. So you had, so in masculine, you had woody, ambery, musky, things like that. Then they had subdivisions, ambery, musky, woody, sandal, things like that. And then they mapped it for the entire century. The entire 21st century was mapped onto it from 1911 to 2000. And the funny or the very interesting thing is, if you look at that, they mapped all the launches and the big releases in that decade on that map. I'm sorry I don't have that here. It would be interesting just to illustrate this point. You will find that there is one big hit in a certain category. Say marine notes are working, a Drakenauer is launched. In that entire decade, so they had two classifications, perfumes which sold more than $10 million and perfumes which were more than $1 million. The funny thing is, all the $1 million were also on the same odor profile, similar to the one with $10 million. Those who are familiar with this genealogy. So people were studying what is the consumer's interest, because a lot of money goes into launching a brand. So if the consumer is looking for a fresh fragrance, he wants to, there is climate change, they are looking for reassuring fragrances, they're looking for fresh fragrances. There is no merit in launching a woody, dark amber when people want to feel good and light about themselves. So of course there is merit in, I will not say copying, but understanding trends. But as I again mentioned, the company which understood trends was in that smaller alphabet of $1 million. But the company which created that trend was in that bold $10 million. So we have to decide which category we want to be in. There's nothing wrong. As businesses, we have to play safe. Every agarbatti manufacturer knows that when your distributor comes and tells you, नहीं sir, मोगरा के साथ रोज तो मांगता ही है, चाहे कम बिकेगा, आपको पूरा रेंज होना चाहिए. You cannot just say mine is a best seller, मैं एक ही plan launch करूँगा. That's part of business.
and we will all have different reasons to do different things. I know customers who have very low quality or low price products exclusively to be manufactured when there is low demand for expensive products just to keep the labor engaged. Now that's again a smart strategy. Some people have very low end products because they want to get rid of all the so-called wastage products that they have in their factory. Again a smart strategy, there is no wastage. You can say I'm ecologically very sustainable because I'm not having any wastage. So these are ideas for everyone's consumption. I do hope these are some of the ideas which excite me every time I think of a fragrance, when I think of a consumer, when I think of creating something. And I do hope that all of you will also take back something from this idea, that how do we create new trends, how do we catch new trends. And let's hope that our country, we will not only compete with each other, but soon we will have international brands which make their mark worldwide. I will leave everyone with a thought, with just one small idea. How many of you are familiar with the fragrance of oud? I'm sure most of you are. How many of you were using oud, say, more than a decade back? Nobody. Today, every French fragrance house worth its name is copying and creating products around oud because of a trend happening somewhere else. That is the strength of the market. That is the strength we as a nation have to create for ourselves, and that is what we need to aspire for. I do hope that all of us together, individually and collectively, do well, and may our country shine. Thank you very much. Last slide दिखाई दो बॉस, मेरा नाम ही होगा शायद. All right, thank you so much, sir. It was amazing the way you described in detail about and everything that we all need to know about fragrances and importance, right? We agree? Can we have a huge round of applause? And also, please accept the token of appreciation, a nice memento, absolutely, by Incense Media. We are happy to have you. Looking forward for a long-term association. And also now, ladies and gentlemen, with a huge round of applause, I would like to welcome on stage Dr. C.K. Lagu, ex-perfumer, HUL, and life member, IICE. Can we please have a huge round of applause for him? A little louder. Thank you. Thank you, Dr. Lagu. It's an honor to have you here with us today. And now, ladies and gentlemen, all right, ladies and gentlemen, I hope everybody's super energetic and super ready for the next session. Yes? Yes, no, maybe? You all want the next session, correct? हाँ कि ना, हाँ तो बोलिए. All right. Yes, so I want that energy in you. Without energy, we cannot start, right? Do you need the next session? That's like my lovely audience. So yes, ladies and gentlemen, the next session will be conducted by the directors, the pillars of Thakral Group, all the way from Nagpur. With a huge round of applause, I would like to welcome on stage Mr. Bharat, Mr. Hasmukh Bhai, and Mr. Samarth Thakral. Can we please have the huge round of applause for the entire Thakral Group? Thank you. We'll start the presentation with a small prayer. अच्छा ओके पक्का है
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you. Next slide. My elder brother, my teacher, my mentor, my everything, Shri Ghanshyam Thakral. Next slide. Thank you. Agarbatti, agarbatti, agarbatti. I don't know anything besides agarbatti. अगरबत्ती इंडस्ट्री नॉर्मल इंडस्ट्री से बहुत हटके है। इसमें इतने सारे अलग अलग एस्पेक्ट कनेक्टेड है कि कहना मुश्किल है। जस्ट नाउ ऋषभ भैया ने बोला कि ट्रेंड्स यू कैनॉट नो व्हाट विल बी हैपनिंग अगेन, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये स्ट्रेटेजीज क्या होने वाला है। अगरबत्ती एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपके खींचे फकत 10,000 रुपये हो और आप यहाँ पे घूम रहे हो तो आप अपनी एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और मान लो आपको आप एक्सपांशन करना है तो 10 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूजा में भी वापरते हैं, बेडरूम में भी वापरते हैं। एंड आई विल से कि अगरबत्ती इज नथिंग लेस देन फिल्म इंडस्ट्री। एक्टर एक्ट्रेस बदल दो, 2-3 गाने बदल दो, सेट्स बदल दो, स्टोरी वही की वही, सुगंध आना चाहिए और आपकी नई फिल्म रेडी है। ऊपर के पैकेज बदल दो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है। इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि आप उसको हैंडल करते करते थक जाएंगे। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो सारे डिपार्टमेंट आपको खुद को ही मैनेज करने का है। सो लेट अस वेलकम समथिंग अ डिफरेंट, अ न्यू समथिंग, अलग हट के सोचना कि भाई अगरबत्ती इंडस्ट्री मैनेज करना है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट स्टाइल क्या हो सकता है। लास्ट 40 ईयर्स से हम यही काम कर रहे हैं। स्टडी करते करते कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरी रुचि श्री रामचरितमानस में रही है, श्रीमद् भगवत गीता में रही है। एक हमारे गुजराती राइटर है श्री हीराबाई ठक्कर, कर्मनो सिद्धांत, मृत्युनो महात्मा, ये भी उनसे कनेक्टेड है। और फॉरेन के कुछ राइटर है जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इनकी भी बुक्स बहुत स्टीफन कोवी की फेमस है, या हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी। इन सब चीज का कनेक्शन लेके ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज BVM शरणम। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनकी शरण में जाके हम कुछ मैनेजमेंट के फंडेस कुछ निकालेंगे। ब्रो VM शरण। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी अगरबत्ती इंडस्ट्री, इसमें 3 चीज महत्व के है कि भी टीम होना चाहिए। आप जितनी भी स्टोरी देखेंगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी साथ में ही काम करते हैं। ट्रस्ट होना चाहिए। ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं, विष्णु जी को उसको ठीक करना पड़ता है। फैमिली होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उनका एक स्वरूप हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं। हमारी इंडस्ट्री इसी के जैसी है। अगर हमारी फैमिली इसमें साथ में है, नथिंग लाइक इट। हमारे तीनों जनरेशन, यंगस्टर्स, कनेक्टर्स, सीनियर्स साथ में, नथिंग लाइक इट। क्यों हम स्टडी करते हैं? द फर्स्ट थिंग, ब्रह्मा जी, इसको हम क्रिएटर कहते हैं। इनकी शादी हुई है सरस्वती जी से, देवी, नॉलेज की देवी जो हैं। वैसे ही हमारे विष्णु जी, उनकी शादी हुई लक्ष्मी जी से, जिसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। महेश जी, उनको डिस्ट्रॉयर के लिए किया जाए, लेकिन डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए कोई चीज? बट द एसेंस इज दैट जब कोई चीज यूजलेस हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करना जरूर होता है। जितने भी बैंक्स हैं वो लोग NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बहुत घबराते हैं, और हमारी अगरबत्ती में NPR, नॉन परफॉर्मिंग रॉ मटेरियल से बहुत घबराते हैं। आपने पैकेट्स छाप दिए, नहीं बिके, पड़े हैं 5 साल 10 साल पड़े रह गए। परफ्यूम खरीद लिया, नहीं चला, पड़ा है। 16 इंची बत्ती का ट्रेंड निकला, दिवाली में बिकी, नहीं बिकी, साल भर घर में ही पड़ी है। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बट ये 3 कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट कर ले तो बहुत कुछ सेफ निकल जाते हैं। यानी तीनों ने मिलके प्रोडक्ट प्लान करना, दैट इज बेस्ट पार्ट। अगेन नीचे चलते हैं। क्रिएटर नॉलेज से कनेक्टेड है। अब नॉलेज, यंगस्टर्स,
यहाँ पे हम तीनों आए हैं खास इसी के लिए। आज के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त फंडा है कि उसके जैसी कोई पावरफुल चीज़ नहीं है, लेकिन समझने बैठो तो समझ में नहीं आती है। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई इतना खर्चा होगा, सेल कितना मिलेगा। ये डिजिटल मार्केटिंग वाले बोलते हैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लीड्स देते हैं, लीड्स। अब लीड्स का क्या करना मेरे को समझ में नहीं आता है, बट लीड्स इज टू बी कन्वर्टेड इन प्रोडक्टिव सेल्स, एक और प्रोसेस है। तो ये यंगस्टर समझ सकते हैं, हम एकदम मैं नहीं समझ सकता स्पेशली। देन है कनेक्टर्स। जो जनरेशन गैप रहता है, जैसे 3 जनरेशन काम करते हैं, तो यंगस्टर्स का लैंग्वेज स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग रहता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सोचने का तरीका अलग रहता है, या सिंपली कि वो इमोशनल रहते हैं, रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल रहते हैं, परफॉर्मेंस दो नहीं तो 1 2 3। उन दोनों के बीच में हमको एक कनेक्टर्स बन के चलना पड़ता है। नेक्स्ट इज परिवर्तन। आज से 20 साल पहले इंटरनेट, मोबाइल कुछ नहीं था। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजते थे कलेक्शन के लिए, पैसा आ जाता था। आज फ्री में दुनिया भर की मूवी चली जाती है। देन सिस्टम, कोई भी चीज डेवलप हो, चल रहा है, स्मूथ सेल हो रहा है, तो कोई सिस्टम काम कर रहा है। जब कोई प्रॉब्लम आता है देन टास्क का काम आता है, दैट इज विद कनेक्टर। एंड देन टास्क, जब कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहे, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। वहां पे विष्णु जी का कनेक्शन। सो विल डिस्कस ऑन अगरबत्ती प्लेटफॉर्म, क्रिएटिविटी, कंटिन्यूटी एंड क्लियरेंस। एक्सपो है, यहाँ पे बहुत कुछ लोग सेल कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग परचेस करना है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे, स्पेशली अगरबत्ती इंडस्ट्री। उसके 3 ही वर्ड के ऊपर हम बात करेंगे। क्रिएटिविटी, कोई नया प्रोडक्ट बनाना। कंटिन्यूटी, उसे डेवलपमेंट करते रहना कि उसकी डिमांड आए, चलते रहे, पैकेट्स खत्म हो जाए। और अगर कुछ कारण से नहीं हुआ तो क्लियरेंस। आज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगरबत्ती में आप सब जानते हैं पैकेट बनाना हो तो 5,000, 10,000, 30,000 में बन जाते हैं। पाउच बनाना तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जिपर बनाना 50-60 हजार। अगर कोई प्रोडक्ट अटक गया तो सारा इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो जब भी प्रोडक्ट प्लान करो, हमने तीनों मिल के प्लान करना कि अगर नहीं चला तो क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द पावर ऑफ यंगस्टर्स। मैं वेलकम करूंगा समर टकराल को, लेकिन उसके पहले कुछ बताना चाहूंगा। हमने करीबन 4 या 5 वेबसाइट बनाई हुई, अलग अलग स्टाइल से। पहले सिंपल बनाई, बोले काम नहीं करती, धंधा नहीं मिलता है, तो बोले डायनामिक बनाया, ये तो स्टेटिक है। डायनामिक बनाए, धंधा नहीं मिला। अब इंटरएक्टिव बनाना, वो बनाई, लेकिन बिजनेस नहीं मिला। तो डिजिटल मार्केटिंग से हम घबरा गए, पीछे आगे, काफी पैसा खर्च हुआ, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। तभी समर्थ की एंट्री हुई और उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म को हेल्प किया है। एंड हाउ हेल्प, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे समर्थ टकरा का, प्लीज समर्थ। थैंक यू सो मच। इट इज़ एन ऑनर इतने सारे सीनियर एक्सपीरियंस लोग के बीच में एक रैदर यंग पर्सन को बोलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैं तहे दिल से मेरे फैमिली का शुक्रगुजार अदा करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मेरा एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा, खाली एक ही स्लाइड पे मैं फोकस करूँगा, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊँगा टेक्स्ट। और ये मेरा एक क्वेश्चन है जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनसे, कितने लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है? आप प्लीज़ अपना हाथ रेज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक 50% से ज़्यादा है। बाकी जो 40% जो नहीं है, मैं स्पेसिफिकली आपको ट्राई करूँगा मेरे प्रेजेंटेशन के अंत तक के कि आप सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाए। हम लोग एक एवरी वीक एक अपडेट लेते हैं ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। दिस इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ई कॉमर्स ऑर्डर्स यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो सारे आ गए। लीड्स एंड सेल्स टीम के जो लीड्स है ये। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन, बट लिंक्डइन जनरली अगरबत्ती से कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि लिंक्डइन में जनरली 2 लाख पर मंथ प्लस वाले लोग आपको मिल जाते हैं, एंड ये सारे पे 20,000 पर मंथ वाले लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं। मैं एक क्विकली आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं और सोशल मीडिया से कैसे आप
सेल कर सकते हैं, यानी कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। ये केवल अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरर्स या हमारे जैसे कंपनीज के लिए नहीं है, सप्लायर्स से लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, इवन छोटे से छोटे पान टपरी वाले भी सोशल मीडिया से कैसा अपना धंधा बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना सेल बढ़ा सकते हैं, उसका एक छोटा सा हमने हमारी कंपनी में कैसे अमल किया है, और शायद आप भी कुछ ना कुछ से सीख करके, कनेक्ट करके आपकी तरफ भी अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, तो मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपका सेल सोशल मीडिया से जितना होगा उससे डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बगैर सोशल मीडिया मार्केटिंग। विल स्टार्ट ऑफ विथ फेसबुक। हमारे फॉलो जितने हैं, इतने लोग ने हमें लाइक किया, इतने लोग ने हमें फॉलो किया, ये फेसबुक का हो गया। फेसबुक में एक और चीज़ है बूस्टिंग करके, इन हम लोग फेसबुक पे बूस्ट मारते हैं और पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को मुंबई में मैंने रोल पैकिंग का या मुट्ठा पैकिंग का एडवर्टाइजमेंट बनाया, ऐड बनाया है। मैंने मुंबई में बूस्ट मारा और एक्सपो के 1 वीक तक के दिया। तो जितने भी मुंबई में लोग हैं जो अगरबत्ती या परफ्यूम से कनेक्टेड है, दे विल नो कि अच्छा रोल पैकिंग ठकराल ग्रुप करती है एंड वो लोग एक्सपो में आने वाले हैं। तो एक ऑलरेडी उनका एक अच्छा ये क्या बोलते हैं विजन बन जाता है, एंड वो लोग वहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं कि हाय आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रोडक्ट। एक क्लिक से उनको डायरेक्ट मैसेज मेरे कंपनी के सेल्स जो पर्सन है मैनेज करता है उनको आ जाएगा, एंड देन दे कैन कम्युनिकेट। उनको एक्सपो में आएंगे तो पता भी रहेगा कि ओके ठकराल ग्रुप करके है जो रोल पैक बनाते हैं, जो मुंबई में चलता है और अच्छे रेट पे बनाते हैं। तो दैट इज अगेन अ बिग एडवांटेज। सेकंड, इंस्टाग्राम का भी हम लोग एक कोलैबोरेशन फीचर करके है, ज़्यादातर लोग को यंगस्टर्स को पता होगा। उसमें कैसा रहता है, 2 कंपनीज मिलजुल करके काम कर सकती है। यानी मैंने किसी फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन किया तो उसके जितने भी फैंस हैं वो मेरा प्रोडक्ट देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बॉक्स पैकेजिंग वाले मेरे क्लाइंट थे, हम उनसे बॉक्स पैक खरीदते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी केक बनाने वाले लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना स्टार्ट किया। सो उनका बिजनेस ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। यानी पहले 10,000 केक के डब्बे सेल करते थे और जितने भी कस्टमर्स थे उनको बोलते थे कि आप प्लीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, एंड विद इन 1 ईयर 10,000 का 30,000 हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली जो उनके कस्टमर्स हैं उनको बोला कि आप जो भी आपके केक का फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उसके साथ हमारा डब्बा का फोटो क्लिक करो और हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेट करो। आपको उसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे, खाली आपका कस्टमर्स और क्लाइंट के साथ एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आपका बिजनेस ट्रिपल हो रहा है। ये मेरे सामने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सो वो एक हो गया। यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, रील्स ट्रेंड्स वगैरह पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको दिख जाता है, वहाँ पे भी एड्स बहुत अच्छे होते हैं। व्हाट्सएप भी एक बहुत पावरफुल जरिया है। व्हाट्सएप बिजनेस मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं करते तो मैं रिकमेंड करूँगा व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करें। उसमें आपके कैटलॉग से लेके क्यूआर कोड से लेके कंपनी का पूरा पीएचडी एक क्लिक ऑफ बटन से आपको आ जाएगा। तो वो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई अपना क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे प्रमोट करना। अपने को 2 चीज़ में इंटरेस्ट है, एक तो ऑर्डर्स कितने आए और लीड्स कितनी आई। ऑर्डर्स हमने क्या किया है, कंपनी के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हमने या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या तो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डाल दिया है। तो कंज्यूमर्स को अच्छे खासे मार्जिन पे वो चीज़ मिल जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर को हमने फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट दे दी कि आप दिल्ली में इसको अमेजोन पे रीसेल करिए, तो हमारा कॉस्ट भी अच्छा खासा बच जाता है। तो ई कॉमर्स अगर आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मैक्सिमम 1 वीक का टाइम लगेगा और आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव हो जाएगा। सो हम लोग अब जैसे देख रहे हैं कि 16 आइटम हमने अभी तक के अमेजोन में सेल किया, और पिछले 6 महीने में हमने 400 पैक्स अमेजोन पे सेल किया। एक इसका वैल्यू अराउंड 1000 है, तो 400 इंटू 1000 ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस का सेल हमने खाली अमेजोन से किया है पोस्ट करते हुए। सो अमेजोन पे भी आई फील कि आपको रहना, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी मीशो भी आ गया है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव फील्ड है उसमें आपने कनेक्ट कर दिया, तो आई फील कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट हो जाए, उससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लीड्स। यानी हम ये जितनी सारी चीज़ें करते हैं वो लीड्स मिलने के लिए करते हैं। एंड जैसे ही हमें लीड्स आ जाती है, यहाँ पे आप कन्वर्ट वाले सेक्शन में चले आएंगे, तो 3 लोग कन्वर्ट हुए, या ये लास्ट जो नंबर है उसमें आपको इंटरेस्ट है। पिछले हफ्ते 175 लोग ने हमें कांटेक्ट किया ये सारे प्लेटफॉर्म से, और 3 लोग कन्वर्ट हुए। यानी ये 3 लोग ने मुझे ऑर्डर दिया पेमेंट एडवांस डाल करके। दिस कैन बी एज लो एज 5,000 से कम हम लोग डिलीवरी नहीं देते, एंड इट कैन बी एज हाई एज लाख।
तो अपन पकड़ के चलते हैं कि 3 लोग ने 10-10 हज़ार का सैंपल ऑर्डर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 3 लोग को 10 हज़ार का ऑर्डर चला गया, उन्होंने उनका प्रोडक्ट और वो सारी चीज़ें चेक कर ली, कंपनी पे ट्रस्ट है नहीं है वो चेक कर लिया, एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, 5 से 10 हज़ार फर्स्ट टाइम रहेगा तो वो चेक करेंगे, फ्रेग्रेंस वगैरह चेक कर लेंगे, हमारा कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे, लॉजिस्टिक पार्टनर क्या है वो चेक कर लेंगे, एंड एट द एंड ये 3 लोग अगर मेरे लाइफ टाइम कस्टमर्स बन गए, यानी इनका अगर मंथली 10,000 इंटू आप मल्टीप्लाई कर लीजिए थाउजेंड ऑफ डेज, थाउजेंड ऑफ मंथ्स, सो वो सेल एक्चुअली करोड़ों में जाता है। सो हमारा मेन इंटरेस्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से एक्सट्रैक्ट करना, उनको लीड्स में डालना एंड एट देन उनको कन्वर्ट करना। एंड अपन रेशियो देख सकते हैं कि 100 में से 3 लोग, 200 में से 3 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 100 में से एटलीस्ट अपन राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। आप हर 50 लीड में से एक लीड कन्वर्ट हो रही है सोशल मीडिया से, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपने सेल्समैन वगैरह नहीं रखा, एक कमीशन पे एक व्यक्ति को नहीं रखा, खाली सोशल मीडिया में आपका पूरा जोर डाल दिया और 50 में से एक लीड कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा रिटर्न है। सो आई फील अगर आप सभी का सोशल मीडिया हैंडल नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए, एंड 5 साल 10 साल बाद मेरे जैसे यंगस्टर्स जब बड़े होंगे वो लोग ट्रेडिशनल कम प्रेफर करेंगे और सोशल मीडिया ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फेसबुक पे क्या ट्रेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या टॉप पे आ रहा है, गूगल रिव्यूज़ पे कौन से कंपनी के ज़्यादा रिव्यूज़ है, कौन से होलसेलर्स के ज़्यादा स्टार्स है, वो लोग प्रेफर करेंगे बजाय कि डायरेक्ट इंट्रैक्शन के या येलो पेजेस के। इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हसमुख सर, बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, इट वाज एक्सेलेंट। जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज आपके बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, और जितने सीनियर्स बैठे हैं किसी भी प्रकार उनको मना पड़ा के अपने साथ में ले लीजिए, बिजनेस गारंटेड डेवलप होगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंटिन्यूटी। बिजनेस में जब सारी चीज स्मूथ चलती है मालूम ही नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम कहां है, सब काम ऑटोमेटिक है, सिस्टम वर्क कर रही है, नथिंग टू वरी। इसमें आपका प्रॉफिट भी बिल्टअप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जस्ट आपको सुपरवाइज कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेनेंस भी हो रहा है, आपके यहाँ सिस्टम बना के रखे हैं, और ऑप्टिमम रिसोर्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हो रहा है, सारे लोग बेस्ट काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्मूथ सेलिंग। बिजनेस में ऐसे बीच बीच में पैचेस आते हैं, टाइटैनिक चल रही है स्मूथ, अचानक एक्सीडेंट होता है, रॉ अगरबत्ती का इंपोर्ट बंद हो गया, अगरबत्ती में प्रॉब्लम, अचानक बैम्बू स्टिक्स के रेट बढ़ गए, अचानक मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। आई विल कम बैक टू द मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग अगेन। यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर हमसे 3 टाइप के गेम खेलते हैं। पहला है सब्सिडी, सस्ते में प्रोडक्ट डाल के कंपटीशन दे करके मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, या बढ़िया फ्रेग्रेंस देके मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, ये सिंपल कंपटीशन हो गया। सेकेंड है लूडो, जिन्होंने भी नए नए पैकेट बनाए, नए नए पाउच बनाए और फंस गए हैं, तो एक दिन डिसाइड करते हैं कि भाई जाने दो, पैकेट के पैसे नहीं मिलते हैं, पाउच के नहीं मिलते हैं, अगरबत्ती भर के जो औने पौने दाम में करके बेच दो। वो प्रोडक्ट ऑल ऑफ सडन मार्केट में आ जाता है, एकदम छा जाता है, हमारे सेल्स में ला के दिखाते हैं ये रेट में देखो इतना प्रोडक्ट दो, तो आपको यू हैव टू बी लिटिल बिट अलर्ट कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, कौन से गेम से आ रहा है। अगर वो उस गेम से आ रहा है तो वो घर जाने वाला है, वो अपना माल बेच के स्टॉप कर देगा, आप फंस जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये अगरबत्ती इंडस्ट्री से कनेक्टेड प्लीज। एंड नेक्स्ट है चेस, जबरदस्त R&D करके कोई ऐसा नया जबरदस्त पावरफुल फ्रेग्रेंस या पैकेट या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या स्कीम, ऐसा कुछ भी लेके आपसे कंपटीशन कर सकता है। अगरबत्ती का बिजनेस जैसा आपको पता है इट्स वेरी डिफरेंट, इसका कॉस्टिंग भी बहुत अलग है, रिवर्स कॉस्टिंग है। नॉर्मली MRP से लोग पीछे जाते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है कि इसकी MRP क्या रखने का है, वो बता सर इसका 70 रुपया होना, इसमें इतनी बत्ती होना, रेट मत बढ़ाना नहीं तो मार्केट गिर जाएगा। सो जो पैकेट आपने 100 ग्राम में लॉन्च किया है 90 में आता है, 80 में आता है, 70, इट गोज अप टू 30 ग्राम्स, लेकिन रेट चेंज नहीं होता है। सो
कंटिन्यूटी मेंटेन करने में आपको ये सारी स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है. नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज कंप्लीशन. अगर आप फंस गए हैं तो अब शंकर जी को बुलाना पड़ता है, और वो कैसे प्रलय करके, तांडव करके इंडस्ट्री को बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स लेके आ रहे श्री भरत भाई ठकराल. जोरदार ताली से स्वागत करेंगे श्री भरत भाई. सबसे पहले ये दोनों बराबर काम करें, 9 to 5:30 काम करें, और उसके बाद में अपना पर्सनल टाइम अपने हिसाब से बिता सके. उसके लिए एक आदमी की ज़रूरत होती जिसका कभी भी फ़ोन कर सके स्टाफ, कोई ग्राहक, कोई छोटा मोटा सप्लायर की भी मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, ऐसा 24 घंटे जो दरबार खुला रहे, वो शंकर भगवान का शिवाला रहता है, वो खुला रहता है. तो ये जो चीज़ है कि किसी को भी आपको 24 घंटे अप्रोच करना है, तो आपने एक आपका फैमिली मेम्बर ऐसा रहना चाहिए कि जिसके पास आप जा सके, आप उसके साथ बात कर सके. इनको 9 to 5:30 सिस्टम के हिसाब से चलेगा. और एक आदमी ने टास्क मैनेज करना है कि आपको उद्घाटन करना है, शादी में जाना है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं रहती. वो उसके पास कोई सिस्टम नहीं रहता. कोई जैसा आया उसके हिसाब से वैसा तिलक करना और उसको वैसे आगे पहुंचना. ये एक यानी ये एक टाइप का सिस्टम है. और कभी कभी गुस्सा हो जाना है. अब वो हमेशा गुस्सा नहीं हो सकते. आपका बहुत बड़ा व्यापारी तो तांडव करना है, तो उसके लिए भी शंकर को बुलाना पड़ता है. पर हम जिस चीज़ के ये जो फिलॉसफी पे बात करें, आप शांति से समझना, ये कोई धार्मिक बात नहीं है. आप फोकस्ड है. समझ में? नेक्स्ट स्लाइड बताइए. चलिए, हाँ, आदि योगी पे ही आ जाएंगे. पहले आपने पूरा फोकस्ड रहना है, आपका ध्यान केंद्रित रखना है, क्योंकि आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, आपके पास कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है. आप 9 to 5:30 वाला जो लोग है जो चला रहे हैं, उसका कभी सिस्टम अटकता है तब आपका रोल चालू होता है. अब इसमें हो किस प्रकार का रहता है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन रहता है, भैया मालक से मेरे को डायरेक्ट बात करना है और मेरे को स्पेशल रेट चाहिए, और वो जो जितना भी आपका कस्टमर हमें 100% राइट है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा ऐसा चाहिए. और वो जब इस प्रकार का रहता है तो उसका जो नीड रहता है उससे कनेक्टेड स्लो प्रोडक्ट जिसमें हम उसको वरदान दे सके. वो बोले भैया आपने ऐसा करना है कि मेरे को 2 नाइट 3 डे का ऐसा हमारे 20 डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पैकेज देना है. वो स्लो प्रोडक्ट वरदान के साथ में उसको हम ये कर देते हैं कि भैया ऐसा 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 है, और उसको वो प्रोडक्ट को जो हम स्कीम बोलते हैं या वरदान बोलें, बाकी ये सिस्टम को तोड़ के, क्योंकि प्राइस लिस्ट टूटता है, आपका प्राइस लिस्ट नहीं है, ये स्पेशली टेलर मेड प्रोजेक्ट रहता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. इसको हम बोलेंगे स्कीम ज़्यादा करके. पर इसमें एक हमको ख्याल रखना होता है कि कंपनी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो टूटना नहीं चाहिए. आपका जो भी है अंदर का फर्नीचर इधर का उधर हो रहा है, ये पहला है. दूसरा ऐसा है कि भैया प्रोडक्ट को लगभग ऐसा समझो इतना नॉन मूविंग है, उसको नए अवतार में लाके देना. अब वो ग्राहक आता है आपके हाथ में, भी ऐसा ऐसा है कि हमारे पास पाइनएप्पल हमको होना. आप यकीन कीजिए, मैं 30 साल पहले एक पाइनएप्पल का चलन था, वो टाइम में बिली मोरो का एक पाइनएप्पल बहुत अच्छा चलता था. अब वो चीज़ जो थी, हमारे ग्राहक को वही चीज़ चाहिए था. कंपनी के पास उसका परफ्यूम का भी स्टॉक था और वो पाइनएप्पल का बॉक्स भी था. वो पाइनएप्पल का सीजन आया तो वो नए अवतार में पाइनएप्पल आ गया, और उल्टा वो जो नया पाइनएप्पल आया था तो हमारा कॉस्टिंग का भी बहुत ये था. तो बहुत अच्छे ऑफर में, जैसे हसमुख भाई ने बोला कि वो जो लूडो वाला गेम है वो तो मेरा पॉकेट, वो घर को ही जाएगा, और वो जो ओरिजिनल पाइनएप्पल वाला घबरा जाए. तो ये वो लूडो वाला जो है वो नया अवतार वाला चीज़ है. और लास्ट जो है वो है क्लियरेंस वाला. क्लियरेंस में आपको 1+1 फ्री, बाय 1 गेट 1 बोगो, वो सब चीज़ें इसमें होता है. अब इसमें खाली एक चीज़ है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कॉस्टिंग नहीं, कुछ नहीं है.
आपको तत्काल आपको वहाँ पे जवाब देना है। आप क्रॉस द टेबल बैठे हो मीटिंग में और उसको ऐसा ही लगता है कि ये सामने जो है ये गूगल का मालिक है, फटाफट फटाफट आप जवाब दो। ये चीज़ है, बहुत शांति से ये करना विदाउट आपके पास डाटा। इसमें कैसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है कि आपको मन शांत और केंद्रित वाला जो चीज़ है उसमें ये चीज़ होती है। और इसमें लास्ट चीज़ जो एक और होती है कि भाई आपने धीरे से वो चीज़ को वाइंड अप कर लेना। जैसा प्रेसिडेंट के पास गए भी आपको ये जो है मृत्यु की सजा है, आप माफ़ कर दो, तो वो कर देता है। वो टाइप का भी यहीं पे होता है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो टास्क मोड वाली बात है, इसमें क्या है कि आपका शरीर अशांत है, शरीर अशांत है पर मन शांत है। पहले वाले में मन शांत था और शरीर शांत था और मन केंद्रित, फोकस्ड, केंद्रित था। इसमें तांडव वाली बात है। इसमें जहाँ जहाँ पे ऐसा होता है, इसेंट्रिक मैनेजमेंट है, पर रिदम इसमें भी, ये नटराज स्वरूप कहा जाता है भगवान का, इसमें रिदम होता है। आप तांडव कर रहे हैं, मैनेजमेंट ये बोलता है कि आप कुछ भी बोल दें, क्योंकि वहाँ पे जो गड़बड़ हुई है उसका आपको ये करना है। तो एक वो चीज़ है और वो बियॉन्ड सिस्टम होता है। और ये आप समझ लीजिए कि आपने जो भी काम किया वो बाद में उसको ये कन्विंस होना चाहिए कि ये जो था वो बराबर था करके। और आप कहीं पे रॉन्ग होना आपको अलाउड नहीं, क्योंकि आप महादेव का स्टाइल से वर्किंग कर रहे हैं, आपको रॉन्ग होना अलाउड नहीं है। ये जो टीम वर्क जो है, इससे पूरे को जितना भी है वो विष्णु के गोल गोल घूमता है। बाकी महादेव का जो है वो कहीं कहीं ऑफिस नहीं होता, कहीं नहीं, आप बैक ऑफिस में कहीं पे बैठे हो वहीं से मैनेजमेंट करना। बाकी अगर विदाउट टीम एक छोटा सा स्टार्टअप चालू नहीं होता, आप इंडस्ट्री लेके चलाना है, विदाउट टीम वर्क कुछ भी नहीं है, विदाउट ट्रस्ट कुछ भी नहीं है, विदाउट फैमिली कुछ भी नहीं है। वो अकेला आदमी रहे, हाइपरटेंशन लेके जीने से अच्छा टीम वर्क, फैमिली और ट्रस्ट के भरोसे पे इस चीज़ को हम आगे करेंगे। मैं हजरत से निवेदन करूंगा, प्लीज़ कम कंटिन्यू करें। थैंक यू भरत भाई, सो नाइस ऑफ यू। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो रहा है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट अस नो। एनी क्वेश्चन? हमारा फोकस एंटर था अगरबत्ती इंडस्ट्री की तरफ में। वंस अगेन रिपीट करूंगा कि फर्स्ट पार्ट इज कनेक्टेड विथ नॉलेज, सेकेंड इज विथ प्रॉफिट एंड थर्ड विथ हैप्पीनेस। ऐसा कुछ आपके पैसे, प्रोडक्ट फंस गया, उसके पैसे खड़े करने के हैं। विदाउट दैट अगरबत्ती इंडस्ट्री चलाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू, आप सब आए, अपने यहाँ शोभा बढ़े, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स टू द इंसेंस मीडिया एंड ऑल ऑफ यू। एक बार जोरदार पहले हम सब के लिए। सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी तरीके से हम सभी लोगों को बिट्स एंड पीसेस में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी, एक्सप्लेन किया। वी नीड पीपल लाइक यू, alright, in this industry, right? So we need the right product with right explanation. That is what you did. So zordar taali ek baar for the entire Chakral group. Ladies and gentlemen, now I would request the three pillars of the Chakral group to please be on the stage. Mr. Bharat, Mr. Hasmukh Bhai and Mr. Samarth Chakral. And I would request you to please accept the token of appreciation by Mr. Goel, Incense Media Expo Managing Director. Ladies and gentlemen, can we please have a huge round of applause? Zordar Thalia. And now I would like to request on stage Mr. Ramakant ji, Director Nishant Aromas Private Limited, with a huge round of applause, guys. Please accept the token of appreciation, the memento, the love, absolutely, by Incense Media. It's an honor to have such dignitaries and highly knowledgeable people like you. Thank you so much.
And now, ladies and gentlemen, would request Mr. Vineet Lohia, Director Technical, Rajasthan Detergent, Jodhpur, to please come upon stage. Please come upon stage and please accept the token of appreciation, a memento by Incense Media. And now, ladies and gentlemen, please do not go anywhere. We are beginning with the next session for the day with Mr. Vineet Lohia, who will be giving you insights about the product, details that you need to know. Thank you. Now, ladies and gentlemen, requesting Dr. G.S. Ranade, Consulting Perfumery and Flavorist on the stage. With a huge round of applause, welcoming Dr. G.S. Ranade. It's an honor to have such senior most people knowing every detail about the industry, having you with us today, and it's really an honor to have you with us for the exhibition. Thank you so much. So we also have the session with Dr. J.S. Ranade later in the evening. But now, ladies and gentlemen, with a huge round of applause, would request Mr. Vineet Lohia, Director Technical, Rajasthan Detergent, all the way Jodhpur, on the stage for the next session of this evening. Thank you. Yeah, just I think presentation needs. नहीं सर वो मैंने उनको एक्चुअली व्हाट्सएप कर दी थी presentation. नहीं हो रहा है? इंट्रोडक्शन भी कर दिया. ठीक है इंट्रोडक्शन कर दिया. और एक माउस भी हो रहा है.
care, I was thinking, why not speak and have a interaction with the legendary people in the industry? Hello, sir. Hi. It's such an honor to have both of you all, right? I want to know from you all that कितने सालों से हो आप like in this industry? 60 years. तो मतलब मैं अंदाजा लगाऊं कि आपकी एज क्या है? Okay, but you look absolutely young. आपको तो देख के लगता है just 50 now, you know. But अगर 60 years industry में हो गए हैं, 83 OMG. But a huge respect to you. 60 years and counting and how. And I think you have more 20, 30 years आराम से to serve the industry. He worked with a company like Liver. Then he was a chief perfumer of IFF, which is largest company in the fragrance and flavor, and Procter and Gamble, and all these big companies. Now he enlightened the youngsters to make the startups, and based on his experience, not only India, worldwide. So if they are not Yes, if we have the technical issue. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आप सभी इंडस्ट्री वेटरन्स को मेरा नमन. थैंक यू. थोड़ा टेक्निकल एरर होने की वजह से प्रेजेंटेशन नहीं चल रही, बट जो मेरा सब्जेक्ट था वो लिक्विड डिटर्जेंट्स के ऊपर था कि लिक्विड डिटर्जेंट्स बनाते हुए क्या क्या लोग गलतियां करते हैं और बहुत बहुत सिंपल मिस्टेक्स होती है और कैसे उनको अपन करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो सारा है. तो जो सबसे पहला आप लोग में से कोई एनीबडी इनटू लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग या बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अभी कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बट ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है. तो आपको ध्यान में होगा कि वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट देयर, राइट? राइट. बट बहुत जने पानी को पानी की तरह सोचते हैं कि यार पानी तो डाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इनफैक्ट वाटर इज द की मोस्ट इंग्रेडिएंट देयर. सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्योंकि 70% हम लोग पानी यूज कर रहे हैं. तो बहुत बार बहुत जने सब चीज़ों की टॉप मोस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स दूसरा ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, बट जो एक पानी है वो सोचते हैं पानी है यार, पानी का क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को. तो जो रॉ मटेरियल वाटर की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड दैट इज़ वन फंडामेंटल एरर वी डू. सो द फर्स्ट की रूल इज इफ यू आर मेकिंग लिक्विड डिटर्जेंट्स योर वाटर हैज़ टू बी एब्सोल्युटली राइट. तो डी आयनाइज वाटर होना चाहिए, लेस देन 5 TDS प्रेफरेबली, क्योंकि अगर आपका बिल्डिंग का फाउंडेशन ही कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग तो कभी भी गिर जाएगी. तो दिस इज वन वेरी फंडामेंटल रूल जो हमने देखा काफी मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, इवन बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी, जो वाटर की इंपॉर्टेंस को रूल आउट कर देते हैं. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड डिटर्जेंट्स. सेकेंड, एक लिक्विड डिटर्जेंट्स में मैं जब लिक्विड डिटर्जेंट्स की बात कर रहा हूँ तो एनीथिंग दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, इट कुड बी डिश वॉश, इट कुड बी योर फैब्रिक, एनीथिंग. सेकेंड जो एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. आप कैसे अभी पीएच मेजर कर रहे हैं? यस, दिस इज अनदर मिस्टेक. पीएच पेपर्स आर एरेटिक. आप चाहे कोई भी कंपनी के लेंगे वो एरेटिक रहते हैं. तो आपको बेंच टॉप पीएच मीटर्स लेने रहते हैं उसमें. तो बेंच टॉप कैलिब्रेटेड पीएच मीटर्स नीड टू बी यूज्ड कंपल्सरी. पीएच मीटर्स आर ऑल एरेटिक. तो आप जो भी पीएच मीटर्स है आप कहेंगे नहीं मैं तो बहुत अच्छी कंपनी का ले रहा हूँ, नहीं,
but we have worked on various pH papers from across the world, and we have found कि जो there is always 1 or 2 points का error आता रहता है. तो just थोड़ा सा brief कर देता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग. तो it's a group, we are a group based out of Western Rajasthan. The promoters are all IIT and Manchester University के post graduate है. हमारा technical tie-up है with scientists from Switzerland, Netherlands and the Germany. हम लोग बड़े इंडिया सेंट्रिक हैं इन ट्रू सेंस. तो हम चाहते हैं कि जो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट से इंपोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स उनको इंडिया में डेवलप करें. वो एक हमारा कंपनी का उद्देश्य है कि भाई क्यों नहीं कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो उसको हम लोग डेवलप करें. तो उसी पे हम लोगों का बहुत फोकस है. अवर की प्रोडक्ट्स आर वाटर बेस्ड एडिजिव्स. आपने फेविकॉल टाइप प्रोडक्ट्स सुने होंगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं. और वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स, उनकी बहुत सी एप्लीकेशंस होती है, डिटर्जेंट्स और लिक्विड डिटर्जेंट्स, और इनमें क्लीनिंग में भी बहुत सी जगह पे इनका यूजेज होता है. 4 यूनिट्स है हमारी, ऑल बेस्ड आउट ऑफ जोधपुर राजस्थान. बट फॉर होम केयर और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डिटर्जेंट पॉलीमर्स, अगर आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट, डिटर्जेंट पॉलीमर्स हैं और सारी थिकनेस की रेंज है जो लिक्विड डिटर्जेंट्स में एसिड थिक लिक्विड डिटर्जेंट्स हो गए, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, डिश वॉशेज हो गए, वाइट फिनाइल हो गया, ऑल दैट सॉर्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इस अभी जो भी टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल एरर्स इन लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, रियोलॉजी मॉडिफिकेशन, व्हाई रियोलॉजी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इश्यूज विद सॉल्ट एडिशन फॉर इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, सिंपल लेबोरेटरी इक्विपमेंट डिटेल्स एंड सैंपल फॉर्मुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन. एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, that making liquid detergents is very easy, but making them long term stable and consistent requires a good understanding of the fundamentals involved. कोई भी जो व्यक्ति जो खाना बना सकता है आज की तारीख में लिक्विड डिटर्जेंट बना सकता है, बट उनको कंसिस्टेंट बनाना और स्टेबल बनाना वो रियल में आपको साइंसेस की अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकता. नेक्स्ट स्लाइड भी. सो जैसा कि मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन मैंने पॉइंट बताया था कि वाटर इज सीन एज वाटर, इट्स द की रॉ मटेरियल. लेस देन 20 TDS वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेफरेबली जीरो deionized वाटर इज कंपल्सरी. Reliance on pH papers rather than calibrated benchtop pH meters. So pH papers we can avoid and use a benchtop pH meter calibrated. So that will give you wonderful consistent results. One very important mistake that lot of manufacturers are doing are they are using MS containers for mixing. MS is made of iron और iron का आपके surfactants के साथ reaction होकर sludge formation हो जाता है. तो बहुत बार liquid detergents में आपने देखा होगा नीचे sludge formation, कुछ टाइम बाद reaction होने का bottles में नीचे कुछ separation होने लग जाता है. One of the reasons for that is we are using MS containers. Another important point is your mixing vessel is not having a VFD. Have you heard of this term VFD, variable frequency drive? किसी को पता है variable frequency drive? तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है. सो इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल टू बाय. सो और कोई भी मिक्सर पे आप इंस्टॉल कर सकते हो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. सो बाय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मिक्सर डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एडिशन की क्या स्टेज है उसके हिसाब से हम लोग उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट इज रियोलॉजी? What is rheology? Rheology is basically the flow of liquids. और flow हम लोगों के लिए क्यों important है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई liquid detergent, ऐसा कोई भी raw material, liquid detergent या dish wash हो कि जो आप कंटेनर से खाली करते वक्त एकदम लम की तरह गिर जाए या ज़्यादा स्पिलेज हो जाए. So basically we are trying to control its viscosity एकदम जब एक कंज्यूमर उसे यूज़ करे तो it flows very smoothly. ना ज़्यादा ना कम, the right dosage goes into the container. So that has to do with rheology. और rheology modification की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो उसका advantage क्या है? Advantage ये control dosing. You can control. अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आप एक कंटेनर में डालेंगे तो ओवर स्पिल हो जाएगा. So it has to be added in a right thick viscous होना चाहिए. ओवर विस्कस होगा तो मटेरियल फ्लो नहीं करेगा, वो दही के जैसा हो जाएगा, तो वो बड़ा ड्रॉप्स की तरह गिरेगा, लम्स की तरह गिरेगा.
कंज्यूमर परसेप्शन, इंडिया में कंज्यूमर परसेप्शन ये है कि अगर इफ अ मटेरियल इज विस्कस देन द मटेरियल इज बेटर. दैट्स अ वेरी कॉमन कंज्यूमर परसेप्शन. सो मटेरियल की अगर हाई विस्कोसिटी है तो वो विस्कोसिटी, आई यू अवेयर ऑफ द टर्म विस्कोसिटी? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, माल का गाढ़ापन को उसको बोलते हैं. हायर विस्कोसिटी मटेरियल होने से फेस सेपरेशन जो होता है बहुत बार वो भी रिड्यूस हो जाता है, और कुछ कुछ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स भी हम लोग एम्बेड कर सकते हैं जो अदरवाइज नहीं पॉसिबल होते. नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि बहुत जने लिक्विड डिटर्जेंट्स डालते वक्त सॉल्ट ऐड करते हैं. तो बट अगर आपने सॉल्ट का यूज़ किया होगा तो सॉल्ट डालते वक्त एक लेवल तक विस्कोसिटी बढ़ती है और फिर द विस्कोसिटी ड्रॉप्स, राइट? तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद सॉल्ट, इसलिए सॉल्ट एडिशन कैन बी अवॉइडेड. सो दीज ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको हम लोग, इफ़ यू वांट एनीबडी कैन वांट्स टू डिस्कस इट विथ मी, कैन डू इट आफ्टर द प्रेजेंटेशन. तो आई विल जस्ट स्किप दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, आपने बहुत बार जगह देखी होगी कि ये कोई पड़ा हुआ है, स्लज फॉर्मेशन हो गया. मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और वो इमीडिएट नहीं होता है. आपने मटेरियल बना दिया, आपने शॉपकीपर्स को भेज दिया, 3 महीने बाद शॉपकीपर आपको रिटर्न करा, अरे भैया ये तो आपके नीचे जम गया है, वापस ले जाओ मटेरियल. एंड दिस इज़ वन प्रॉब्लम विच इज़ अफेक्टिंग एवरीबडी, और इसी का कारण है कि लिक्विड डिटर्जेंट्स में बहुत सी कंपनियां सक्सेसफुल नहीं हुई है. ये सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का टेक्निकल इशू है. डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग एंड लिक्विड डिटर्जेंट मेकिंग इज एंटायरली डिफरेंट. दो फंडामेंटली बहुत से इंग्रेडिएंट्स कॉमन है, बट देर इज डिफरेंस. टर्बिडिटी इश्यूज, सब ठीक है, सब कुछ सही है, बट वो लोग बोलते हैं कि मटेरियल क्लियर ही नहीं बन रहा है, माई मटेरियल इज नॉट वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है. सो एस्थेटिकली अगेन इट वुड लुक वेरी अच्छा नहीं लगेगा कि यार आपका धुंधलापन आ रहा है, वो आ रहा है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है. तो अगेन टर्बिडिटी इश्यूज आर देयर. सो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट अगेन एडिशन ऑफ सॉल्ट टू इंक्रीज द विस्कोसिटी इज वन फंडामेंटल रीजन फॉर दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये जो भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बताएं, दे आर ऑल वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एंड एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग or any cleaning material in liquid form should have all these laboratory equipments. One is a TDS meter to check the quality of water, जो मैंने सबसे पहले बताया था. Second is calibrated benchtop pH meters. pH meters calibrated होने बहुत जरूरी है. Third is centrifuge. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है सेंट्रीफ्यूज, जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है बट आपका बहुत समय बचा देता है. इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने मटेरियल बनाया, आपने देखा होगा जो सेपरेशन होता है वो कुछ समय बाद होता है, आफ्टर 2 months 3 months. तो क्या आप 2 महीने वेट करेंगे? हर बार कोई नया फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो क्या 2 महीने वेट करेंगे? तो आप इसमें सेंट्रीफ्यूज में मटेरियल रख दीजिए, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं और आपको कुछ ही घंटों में वो रिजल्ट मिल जाता है, जिसके लिए आपको 2 महीने या 3 महीने वेट करना पड़ता था. एंड माइंड यू, दिस इज नॉट एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. ये सारे इक्विपमेंट्स आपके बहुत कम कॉस्ट में आ जाते हैं. फिर देन दिस अनदर, जो विस्कोसिटी बनाई उसके 2 तरीके होते हैं विस्कोसिटी मेजर करने के लिए. वन इज योर फोर्ड कप एंड द अदर इज ब्रुकफील्ड विस्कोसिटी. तो ये जो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर होता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड होता है कोई भी विस्कोसिटी का पैरामीटर बताने के लिए. फिर ये तो रहे क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि भाई मटेरियल के किस सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है. परफॉर्मेंस के लिए आप एक छोटी सी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं आपके एंड पे, विच विल अगेन नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. और आप परफॉर्मेंस की दूसरी टेस्टिंग करनी है कि और उसको क्वांटिफिकेशन करना है तो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से करा सकते हैं, क्योंकि दैट नीड्स टू बी डन ओनली वंस. एक बार ही कराना होता है, वो रोज का नहीं होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग. नेक्स्ट स्लाइड. एक ये सिंपल फॉर्मुलेशन दिया है, जो आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्मुलेशन, और इसमें हमने सॉल्ट का और रियोलॉजी मॉडिफायर जो कि आरडीपॉल T200 करके है, इसका हमने ऑप्टिमाइज यूज़ किया हुआ है. और एक ACR 4500 करके एंटी डिपोजिशन एजेंट है. एंड दी अदर्स आर ऑल योर कॉमन इंग्रेडिएंट्स, लेप्सा, कास्टिक, SLES, एवरीथिंग. एनीथिंग टू, इफ यू विश टू अंडरस्टैंड इससे रिलेटेड तो आप मुझे आफ्टर दी प्रेजेंटेशन बात कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वो जो फॉर्मुलेशन का था उसमें सॉल्ट और रियोलॉजी मॉडिफायर विनर के बिना 100 सेंटीपॉइस की विस्कोसिटी थी, और नाउ
after addition of salt and the rheology modifier RDPOL T200, the viscosity has gone up to 2400 centipoise. तो 24 times viscosity का increment हो गया. ये वीडियो से भी आपको देख सकते हैं कि वो जो 2400 centipoise that is difficult to इतना आसानी से नहीं मिल रहा है. That's highly viscous. मेरे पास पूरा एक डेमो किट भी था, बट अनफॉर्चुनेटली आई लेफ्ट इट. सो नहीं तो उसमें आपको मैं करके भी दिखाता. So this ends my presentation here. Any questions if anybody has on liquid detergents or anything to do with surfactants or detergent chemistry, can please feel free to ask. Otherwise, I'll just end my session here. Okay. Yeah. After neutralization. जी. आपका ग्लेप्सा और कास्टिक लाई का न्यूट्रलाइज होने के बाद यू कैन यूज ACR. परफ्यूम का परसेंटेज कितना? इट डिपेंड्स ऑन कौन का परफ्यूम ले रहे हैं आप. वो परफ्यूम सप्लायर वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि क्या होता है, बट अराउंड 0.1% to 0.2% ही रहता है ज़्यादातर. वाटर बेस्ड परफ्यूम और वाटर बेस्ड इज बेटर. अदरवाइज आपको कोई सॉल्युबलाइजर लेना पड़ेगा उसके साथ में. So a perfume manufacturer will guide you on that. Otherwise you will have to try a solubilizer like Twin 80, Twin 20. उसको solubilize करना पड़ेगा परफ्यूम के अंदर या कोई भी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के साथ. So it's better to go in for water soluble perfumes. और सर जो कलर यूज करते हैं हम, That also needs to be water soluble और उनका pH में stability check होना चाहिए. आप जो कलर मैन्युफैक्चर है उनसे आप पूछें कि क्या इस pH में इतने टाइम तक स्टेबल है या नहीं है. क्या होता है, बहुत से कलर्स हाई पीएच के अंदर डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, ब्लू कलर बिकम्स ग्रीन, और वो इमीडिएट नहीं होते. ये सारे रिएक्शंस बहुत समय लगाते हैं. तो ये रिएक्शंस होते होते आप तब तो मटेरियल भेज चुके हो, पैक कर चुके हो, कंज्यूमर के पास पहुंच चुका है, और आपने बोला कंज्यूमर को ब्लू कलर है, उसको ग्रीन कलर मिल रहा है. सो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया. कलर स्टेबिलिटी नीड्स टू बी चेक्ड. कलर की स्टेबिलिटी जरूर देखें, और जिससे भी कलर ले रहे हैं उसको बताइए कि मैं इस पीएच रेंज में यूज करने वाला हूं और मुझे 1 साल से 2 साल की कम से कम स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए. और पीएच कितना रहना चाहिए? पीएच लिक्विड डिटर्जेंट्स के लिए अप टू बिटवीन 8 to 10. 8 to 10. यस. एकदम बहुत जने 7 के आसपास रखते हैं, दैट इज रॉन्ग. नो, 8 से 10 रखें. नियर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है इंडिया में. 8 to 10 इट शुड बी 8 to 10, नहीं तो परफॉर्मेंस अपना कम हो जाता है. थैंक यू सर. मैं अब तक साथ ही रहता हूं. थैंक यू सो मच सर. एनी मोर क्वेश्चंस? हमारी ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी डाउट पूछना चाहते हैं? जी मैम. हेलो, क्या लिक्विड डिटर्जेंट में हम हाइड्रोसोल डाल सकते हैं क्या इंस्टेड ऑफ परफ्यूम? आई थिंक वाटर सॉल्युबल परफ्यूम्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन. ओके. थैंक यू सो मच मैम. और भी वहां पर एक सर है. ये सर. सर जी, ये जो डिटर्जेंट है, ये जो आपने अभी कल, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस किसकी डिमांड रहती है? फ्रेग्रेंस के लिए मेरा जो एस्पेक्ट है डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग का, फ्रेग्रेंस के लिए आपको अलग अलग फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने पड़ेंगे. और बहुत सारे यहाँ पे फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आपके जो भी आपको अच्छा लगता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. कंज्यूमर का किस फ्रेग्रेंस की तरफ परसेप्शन होता है, दैट्स डिफरेंट. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. और कोई हमारी ऑडियंस में से पूछना चाहता है? एनी डाउट्स? ओके सर. ऑलराइट. ओके, थैंक यू फॉर टाइम. थैंक यू सो मच सर. तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. प्लीज गिव अ बिग हैंड. वी हैव विद अस Mr. Vineet Lohia sir. Sir is the Director Technical from Rajasthan Detergent Jodhpur, and thank you for visiting us and giving us immense knowledge. And sir has maintained the viscosity of the session. So once again, please give a big hand for Mr. Vineet Lohia sir. Thank you so much. We grace your presence, and then we are heading towards our next session. तो मैं जानना चाहूँगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी ऑडियंस की तरफ से भी एक immense response यहाँ पर आया है. और अब इसके बाद में हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं. और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि विथ मैच्योरिटी एंड सीनियरिटी नॉलेज जो है वो डबल और मल्टीप्लाई हो जाता है. और हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है, जिनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद एक सेशन भी कम पड़ जाएगा. सर के पास में जितना नॉलेज है उतनी तो शायद हम में से कई लोगों की उम्र भी नहीं है. हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर, एक ऐसे सीनियर
कंसल्टिंग परफ्यूमरी एंड फ्लेवरिस्ट एक्सपर्ट जिनके बारे में अगर हम यहाँ पर जानते हैं या जिनसे हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, तो शायद उनका नॉलेज सिर्फ एक पर्सन का नॉलेज नहीं है, वो काफ़ी सारे एजेस एंड कंपनीज का नॉलेज है। तो हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर GS रानडे सर, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिए। सो मैं स्टेज पर डॉक्टर GS रानडे सर को बहुत ही आदर के साथ इन्वाइट करना चाहूँगा, बहुत ही सम्मान के साथ इन्वाइट करना चाहूँगा, और सर से निवेदन करूँगा कि आप हमारा आगे का सेशन जो है उसे हेड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। Good afternoon, everybody. I'll give you my introduction in 4 sentences. I am in this industry for last 59 years. Okay. Hello. What is happening? Okay. I am in this industry for last 59 years, working all aspects of products and perfumes. So here I want to just share few things with you, which I will call as a development in perfume industry. Initially in 60s and 70s, perfume industry status was no imports were permissible. Import duty used to be 150 to 300%, and product were classified as multinational and local 1 or 2 industries. After that, slowly import duties came down, and now it is at workable and affordable conditions. I basically worked for underdeveloped and developing countries of the world for perfumeries of all the products. But I worked for the companies like Unilever, Procter, IFF, and others, all multinational companies. But my focus was, after working with these industries for 50, 60 years, that we have to look at the perfumes for developing and underdeveloped countries. So I was appointed as a technical perfumer for all global industries in my company. So first example, I want to just sign out my first brief. In Saudi Arabia, one big detergent perfume company, they wanted perfume, and okay? Okay. And the brief was, the detergent powder perfume, its life is 3 months. After 3 months, if perfume doesn't stay, it doesn't matter. The requirement was 10 tons per quarter, and price should not be more than $3. That time $1 used to be 29 or 30 rupees. That was the brief. We worked for the company and then found out that they got product from so many companies at level 0.1, 0.01, 0.005, and working for 3 months, 6 months. I said, no, this doesn't gel, it doesn't work. If you say your perfume is 0.01% and it will stay for 1 year, nobody will believe in it. So first thing we did, we developed a perfume which was raw material $1, means 30 rupees, and told them to use it at 0.2%, which those days was the level of perfumes in detergent powder. It worked well, and my company did that business for nearly 4 years in Saudi Arabia. It's one example. So, especially when you work on perfume, perfumer has to see the nature of the product, how long it lasts in the market,
what is the requirement, and the most important thing is what is the standard of perfume. Standard is the consumer, whatever he likes is the standard of that perfume for that product and for that customer. So there is nothing, no single standard. Even if you say this is from US, this is from UK, this is from Germany, doesn't work. It should satisfy the user and manufacturer company. Second thing, many times what type of perfume you want. In fact, I spent nearly 3 months on this project in Nigeria. And the marketing person, their marketing person was a lady, and she said, we want vanishing cream which has chocolate smell. How do you do that? Now once you say chocolate, people say it is flavor and it is only for edible thing. Why on cosmetics? So I spent some more time, visited market, visited many of the customers, and then I found they like sweet vanilla type perfume for all cosmetics. Once decided that, we developed perfume, and all the development work was done in Dubai and South Africa. So market is there, you can see the customer, you can see people habits, you can ask them, demonstrate them, ask them, do you think this is good perfume? So we developed a perfume which was sort of a chocolate ice cream perfume, which is soluble in cosmetics, and they started buying it. That company became market leader because that is the product liked by all the companies, all the people, consumers are happy. So what is the standard of that particular product for that sector, for those consumers and for that company is chocolate perfumed cosmetics. Likewise, if people ask what is the best perfume, there is no answer. Best perfume depends on various people, various categories, what they use. Mango, you will be surprised. In one of the countries, mango perfume used for shampoo. Very satisfying. And then some of my colleagues from Europe and other countries, they ask, what if your hair smell like mango? Do people like it? I said, no, but I like it. So when I am using it, during using, I smell that fragrance, I smell the shampoo, I apply it on my body, I am happy. I am not going to show my head to other people saying, see what shampoo I have used. So basic thing is, whatever consumer likes, whether it is from high class, middle class, lower class, or from poorest sector, what he likes is the standard of that product for that group. Then you can find out from your marketing how many such groups are there. And especially country like India, there are thousands and thousands of small groups, they like all these things, and that is the market for small scale industries. Other things, other products work only on advertisement, on television, everywhere, then presenter and fashion designs and all these things. But basically, if you want to learn perfumery, second thing is lasting character. What is lasting character? Perfume stay for in a product for 6 months or 1 year. How many of you use one soap for 6 months or 1 year? Nobody. At the most 2 to 3 months. So if perfume lasts in soap for 2 to 3 months, and your consumer is like this, what they like, they can prefer it. Why not to go for that? So these are the small tips which I learned in my 59 years experience working globally with the developing countries, underdeveloped countries and developing countries, not highly developed countries. Because they won't understand the concept. Concept is digital. Whatever you like is your standard. Thank you, Yunus. This is about, in nutshell, some development which I myself learned. Still I am learning many things, but for myself. Thank you. If you have any questions, please ask me.
Thank you so much, Dr. Ranade. Any questions in the audience? If you want to ask, their sir is asking something. Yes. लिक्विड डिटर्जेंट के लिए कौन सा परफ्यूम बेस्ट रहेगा? Is a difficult question. As I told you, in your area, you just show one or two or three products with one or two different perfumes which you can afford, a level and price, and show it to them which one you like. If you show it to 20 people, if 12 or 13 people say this is better, that is the perfume. You don't decide. Because it is not for you, it is for your customer. If you like it, well and good. This is the way. Consumer decides what they like. I think that is my. Does it satisfy you? Thank you. Otherwise, if price is your criteria, go to the market and tell them, give me any perfume at 200 or 300 or 400 rupees price, which should be soluble in liquid detergent, and this is my sample. Give him the sample, he will show the perfume fully dissolved, as previous speaker said. Clear, you keep it for 2 to 3 months in the sun and see whether it separates or becomes turbid. If it is not, that is your choice. Thank you, sir. Okay? Thank you so much, sir. Yes. Any more doubts? Okay. Sir, what is the basic course or basic books are needed for learning this perfumery from the basics? In fact, I am just telling you how I learned. Okay? When I joined the perfume company, they were using only 100 aroma chemicals for about 10 to 20 products. And now people use 1,000 to 2,000 different chemicals to give similar material, but sophistication. This is like if you have laddus, come sugar, jada oil, good color, likewise make all these things, all are laddus. Depending on price and your like, you can. So study is long, on experience only you learn many things. But there are basic courses, but I used to conduct few courses long back, now I stopped it. But in fact, if you want this thing, you can pick up 3 or 4 ingredients, smell them, see which one you like, and then try to find out similar ingredient. And once you have say 5 such ingredients, perfumery ingredients, you smell them first, keep them. We have what is called perfume blotter strip. You keep it on the strip for 4 hours, 6 hours, 8 hours next day. See how long it lasts. One which lasts for more than 6 hours is good for you. Which goes off may not be good for you. Okay? Yes, sir. Yes. Any more questions? Audience, among the audience, any more questions for the sir? Okay, thank you so much, sir. Sir has given us great knowledge about perfumery, and sir said one thing, that if you want to know anything, you have to first taste or smell it or analyze it. Unless and until you don't smell it and analyze it, it won't work. Whatever sir was saying about shampoos, I was very able to relate with it, because earlier shampoo was not a very big part of my life, but since some days shampoo has become a great part of my life. So I was really imbibing whatever knowledge sir was giving. Thank you so much, sir, for giving us immense knowledge about this field. And now it's a time for another session by Mr. Shakti Vinay Shukla sir, Director FFDC. If sir is with us, we are going to listen a great session by Mr. Shakti Vinay Shukla sir. Till then, we have to wait for sir. So we give a big thank you to Dr. G.S. Ranade sir, consulting perfumery and flavorist, and sir has given us immense knowledge about perfumery and flavorism. And now we are waiting for Mr. Shakti Vinay Shukla sir. We give a big thanks to all our speakers. One more important thing to tell about, we have Dr. Sitaram Dikshit sir with us. Please give him a big hand. If you are going to attend the expo tomorrow, we are going to listen from sir also. So we have great speakers with us. Thank you so much to all the speakers who have given us knowledge. And now we have our next speaker with us, Mr. Shakti Vinay Shukla sir. And if I tell about Mr. Shakti Vinay Shukla sir, it
is going to take a long time because sir has achieved so much, and it's a great honor for us that we are going to listen from sir. Sir is Director Fragrance and Flavor Development Center, Ministry of MSME, Government of India, Autonomous Body, and sir is from Kannauj. And when someone is from Kannauj, how we can't say about his knowledge, because Kannauj is known as the fragrance city of the India. As we all know that Kannauj is the center of all the fragrance, whatever we have in India. So sir is from Kannauj, and someone who is from Kannauj is the expert of fragrance. And it's a great pleasure that we are going to listen from Mr. Shakti Vinay Shukla sir. So now we are heading forward to our next session by Mr. Shakti Vinay Shukla sir. And sir is the Director of Fragrance and Flavor Development Center, Ministry of MSME, Government of India, Autonomous Body. Sir is from Kannauj, Uttar Pradesh, India. And it's a great honor for us that sir is a part of our today's session. So once again, I welcome you all to the Incense Media Expo 2023, in which we have the 7th Agarbatti and Perfume Expo 2023 and 5th International Soap and Detergent Expo 2023. So we are heading forward to our last session. We heard various speakers today, we heard a complete group today, and now it's time for us to listen to Mr. Shakti Vinay Shukla sir, who is the director of FFDC, and this would be our last session for today. So I request, wherever my sound is reaching in this hall, all those who want to gain some knowledge about our field, about the soap, detergent, agarbatti and perfume industry, they can join us in the conference hall area. Wherever my sound is reaching to the exhibitors, visitors and all the audience present over here, I request you all to please join us at the conference hall for our next session. So with all due respect, I call upon Mr. Shakti Vinay Shukla sir on stage. Please give him a huge round of applause. We have with us our speaker, Mr. Shakti Vinay Shukla sir. Thank you for a nice introduction. Before we go ahead, I would just like to show you a small film about Fragrance and Flavor Development Center Kannauj, so that you could be able to have an idea what kind of a facility we does have, and what kind of a support service we do give. It will take just few minutes, and after that I will go ahead with my presentation. Please go ahead with that is small video. कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन के काल में आज दुनिया में इत्र बनाने का इकलौता केंद्र। कन्नौज के अलावा केवल दक्षिण फ्रांस में ग्रासे ही एक इकलौती जगह है जहां किसी एक कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के काल में भारत की राजधानी और आज दुनिया में इत्र बनाने कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के काल में भारत की राजधानी और आज दुनिया में इत्र कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के काल में भारत की राजधानी और आज दुनिया में इत्र बनाने कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के काल में भारत की राजधानी और आज दुनिया में
कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के काल में भारत की राजधानी और आज दुनिया में इत्र बनाने का इकलौता केंद्र। कन्नौज के अलावा केवल दक्षिण फ्रांस में ग्रासे ही एक इकलौती जगह है जहां किसी एक स्थान के ज्यादातर लोग सुगंध बनाने के कार्य में लगे। कन्नौज की इत्र बनाने की विधि लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, जिसके लिए कन्नौज को भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त है और इन्हीं कारणों से भारत सरकार के MSME मंत्रालय ने 1991 में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की, जो कि दुनिया का इकलौता केंद्र है जहां सुगंधित पौधों की खेती से लेकर सुगंध बनाने तक की सारी तकनीकी जानकारियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। ऐसा कोई दूसरा केंद्र भारत में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। यह केंद्र किसानों से लेकर सुगंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों को हर प्रकार की तकनीकी जानकारी व सहायता उपलब्ध कराता है। इस केंद्र पर किसानों को विभिन्न सुगंधित पेड़ पौधों जैसे मेंथा, लेमन ग्रास, स्ट्रोनेला, तुलसी, गुलाब, चंदन, पामारोजा आदि की खेती के बारे में तकनीकी जानकारियां, उन्नत किस्म के बीज व पौधे तथा उनसे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके। इन सुगंधित पौधों की खेती व तेल निकालकर किसान 30,000 रुपए प्रति एकड़ से लेकर 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक लाभ प्राप्त कर लेता है। पहले हम लोग जो है जुड़े हुए थे अनाज संबंधित खेती से, कि FFDC के जब संपर्क में आए तो यहाँ के पेपरमिंट का जो है हम लोगों को जड़ें मिली और उससे हम लोगों ने बहुत से किसान भाइयों ने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं उससे जो है जुड़ के उसका उत्पादन किया, अपने जो है इसके सहयोग से प्लांट लगाए और उससे सभी किसानों को बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। जब से हम FFDC के संपर्क में आए, मेंथा की खेती पेपरमिंट करना शुरू किया, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और इसके डिस्टिलेशन के 5 प्लांट लगाए हैं और मैं अपना भी निकालता हूँ तेल और बाकी किसानों का भी निकालता हूँ। अब हमारे क्षेत्र के सभी किसान जो है बहुत पैदावार कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो गेंदा की खेती में लोग गेंदा की खेती करते हैं, हमारे आसपास 50 गांव में गेंदा की खेती होती रही है बहुत समय से और लोग फूल बेचते रहे हैं, किंतु जो उसका पेड़ पौधा फेंक दिया जाता था उससे हमने तेल निकाला और तेल निकालने पर उसमें विशेष आमदनी का जरिया निकला। मेरा नाम रामलखन है। मैं बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद इस हर्बल कल्टीवेशन के व्यवसाय में आया हूं और मैंने FFDC से पहले ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मैंने ये काम शुरू किया और तब से मैं जो है विशेष तौर पे एलोवेरा, सतावर, अकरकरा और तुलसी इनकी खेती काफ़ी बड़े स्तर पे कर रहा हूँ। इनके सहयोग से हम लोगों ने एक उत्पादकों का समूह बना रखा है और उस समूह से जो है इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पर तेल निकालने के साथ साथ आधुनिक ढंग से तेलों में मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन भी किया जाता है ताकि इसमें और ज्यादा लाभ मिल सके। इसके साथ ही इन पौधों से सुगंधित पदार्थ निकालने की अत्याधुनिक विधियां भी मौजूद हैं, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रीजर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हाइड्रो जनरेशन आदि। इन विधियों का उपयोग करके उद्यमी और भी अधिक लाभ प्राप्त करता है। FFDC की वजह से जो कि जैसे यहाँ टेस्टिंग सबसे बड़ी समस्या थी है कि यहाँ पर हम लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं, संदल ऑयल है और इसेंशियल ऑयल है, उनका कहीं पर कोई टेस्टिंग की कोई लैब नहीं थी। तो एक गवर्नमेंट का उनके लगा हुआ है जो इस वजह से उस पर जनता लोग विश्वास भी करते हैं। ये जो रिसर्च सेंटर है यहाँ पर पूरे देश के उद्योगपतियों को बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ जो इस रिसर्च सेंटर में जो वैज्ञानिक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और वो टेक्नोलॉजी सिखाते हैं जो फ्रांस और US में है। सुगंधित तेलों के लिए केंद्र ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए 10 वर्ष पूर्व विशेष मापदंड बनाए, जिसके आधार पर ट्रेडिंग शुरू हुई। और किसानों को 10 से 15% ज्यादा लाभ मिलना शुरू हुआ और मेंथा के बाजार में पारदर्शिता भी आई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत इस क्षेत्र में 90% भागीदारी लेते हुए दुनिया का सर्वाधिक मेंथॉल मिंट उत्पादन करने वाला देश बना।
साथ ही साथ ये केंद्र खाने व लगाने वाली खुशबू यानी फ्रेग्रेंस व फ्लेवर के निर्माण की जानकारी लोगों को देता है, ताकि वो विभिन्न खाने व लगाने वाले पदार्थ के लिए सुगंध एवं सुरस बना सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। हम लोगों को एफएफडीसी ने 7 दिन तक ट्रेनिंग दी। हमारे काम का अब अच्छा अंजाम है। जैसे प्रदर्शनी महोत्सव में तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट ले जाके वहाँ बेचते हैं और जिससे अच्छा पैसा कमाते हैं। सन 2012 में मैंने ट्रेनिंग करी थी एफएफडीसी कानपुर यूनिट से। ट्रेनिंग करी तो मेरे को काम समझ में आया, तो छोटे उद्देश्य की करा था कि थोड़ा बहुत करेंगे, घर से काम होगा हमारा, लेकिन करते करते मेरे को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, तो मैंने अपना टायरों का काम बंद करके मैं टोटल इसी पे ही वर्किंग कर रहा हूँ इस वक्त। केंद्र के इन प्रयासों से किसान खेती करने से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पैठ बना रहा, और वो दिन दूर नहीं जब खुशबूदार पौधों की खेती और खुशहाली एक दूसरे का पर्याय होंगे और विश्व के मानचित्र पर भारत एक सुगंधित राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। So, today we'll be talking about some of the aspects related to agarbatti industry and the role of FDC. Next, please. Next. Initially, we'll be just talking about some of the aspects related to the market data and the market scenario. Then some of the challenges which we do face into the agarbatti and how we could able to do some innovation and could able to go ahead into the same sectors, and what would be the role and what we have contributed to this sector of agarbatti by Fragrance and Flavor Development Center, Kannauj. Next, please. When we talk about an agarbatti, basically it's a religious product used basically by majority of the people, and majorly the agarbatti is a cheap product. Normally the unskilled women and knowingly, unknowingly the children are also working. The possibility of getting into the export business does exist. Next, please. The different country does use this product being sold as a different product. In the France, it is being sold as a religious product, but in the case of Brazil, it goes as a cosmetics one. 82% of the Indian does use it, and it is one of the most secular product used by practically all religions across the globe. Next. When we talk about heritage, it's nearly 5000 BC. It is being found, its citation in a number of literature in Vedas, Puranas, Bhagavad Gita, and different mythology in different countries, in Egyptian, Chinese, Christian, and all other places. The Vedic test site, it's around 2000 BC. Normally, this was being used for meditation, spirituality, for pleasure, and getting rid of the bad smell, in some cases to repel insect. Next. When we talk about the human resource, nearly 12 lakh people are being employed into this sector, and 80% of the people are working from home, and nearly 90% of women are working into this sector, and nearly 154 countries are using agarbatti.
Next. Nearly the market size at present is around something around 9,000 crore, having more than 8,000 units which are unregistered and nearly 2,000 which are registered, and there are nearly 600 exporters. The growth rate is around 15% per annum. That clearly indicates there is enough space for any new entrant to pitch in. Next, please. When we talk about region-wise, it goes to an extent of 35% into the southern part and 30 into the western. The rest 17 and 18 goes to eastern and the northern part. Next, please. Then when we look into the state-wise, this is just rough data. Not all the states are being taken into consideration, but the major again goes to Karnataka, followed by Gujarat and Bihar. Next. Now, this will be helpful for those who are coming up as a new startup. Basically, for home use, nearly 70% of the people are using this particular product. While we talk about for sacred places, it is the 17%, and only 12% it goes for the office purposes. Next. Then how often people do use? There are certain people, nearly 67% of the people do use it on a very regular basis, while there are 27% of the people who use it sometimes, and there are 6% who use it rarely. So this clearly indicates that there are good quantum of people who use it on a regular basis. Now the question comes up, what is the pack size which is being used? The major pack which is being used by the people is the 2-pack size, that is to an extent of 41%. Then it is followed by 3 and 4-pack, that is to the extent of 25 and 26%. Next. Then how much amount they spend monthly on an agarbatti? It goes to an extent of 51 to 100 rupees are being spent by the people. That are 45%, and then there are nearly 25% the people who spend 25 to 50%, and then 200 or above is being spent by nearly 13% people. So this is just to give you an idea, and this will help you when you are planning for your product, positioning your product into the market. Next, this is about the export data. The major export which we do into the international market, it goes to US and then to some of the other countries to an extent of few percent. Next. Then market is fairly highly fragmented. There are few players who are fairly big. There are few 4 or 5 players who dominates the entire market, and rest are being taken by some of the other people. Next. The 20% is only the organized, though this is increasing day and day by now, but still the major sector is unorganized, and the 90% workforce are still women. Next. The consumption pattern. This is something very important when somebody who is coming and entering into the market. This is a low cost involvement, and somebody prior to this, some of my other earlier speakers who was talking about that if you have got just 10,000 rupees in your pocket, you could able to start your venture, and that is true. And the reason lies that a lot of people are not brand loyal. Normally a decision is being taken by the person who sits normally outside the temple or the holy place. He or she decides what you are going to buy, and normally the purchase is based on packaging and the fragrance which comes on the package. It's more for religious purpose, and it's retailer who decides. It's not the customer in most of the cases. So it's easy to get in, but equally easy to get out. Next. This is about the consumption pattern, just to give you an idea about the low income and the high income group. Next. This is the very interesting data. It talks about major consumption is still into the rural area as compared to the urban area. Though in the time to come, I will be talking about innovation. I will be focusing on that
this pattern is going to be changed in the time to come, and there are reasons for it. Next. Then the purpose, particularly for the puja, it goes for to an extent of 57.9%. For some other religious purposes, it goes to an extent of 23.4. Just for the sake of fragrance, it is only 17.8% people do use the agarbatti, and just 1% for the other purpose. Next. This is a very interesting data which has been done quite long back. So what is being written on the product and what you actually found about the product. जो खुशबू लिखी होती है और जो प्रोडक्ट पर मिलती है, दोनों में अंतर होता है. और करीब 35% लोग ऐसे थे जो इस बात से बहुत दुखी थे कि जो प्रोडक्ट पर लिखा था या जो इमेज दिख रही थी और जो प्रोडक्ट था उसमें अंतर था. यूनिफॉर्मिटी इन साइज का इशू था, लेकिन धीमे धीमे मशीन मेड अगरबत्ती आने के बाद ये इशू रिलेटिवली कम है. हैंडमेड अगरबत्ती में इशू रहता है. देन खुशबू लगा होने के बाद लंबे समय तक नहीं टिकता या स्टेबल नहीं है अगरबत्ती में, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. उससे भी काफ़ी कस्टमर डिसअपॉइंट थे एंड अगरबत्ती का ठीक से नहीं चलना. तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आप भी अगर काम कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट. देन दिस इज अबाउट the issue because a lot of work is being done by KVIC, a lot of people are coming up. But the issue is we need something around 15,000 tons of unperfumed agarbatti and nearly 5,000 tons of the bamboo on an annual basis. And that quantum of material is relatively not available as on date. And machines are being given by the people. But the issue is these are the natural material, and until unless a good quantum of cultivation is being done on a sustainable basis, to take this industry to go ahead and to become an Atmanirbhar is still a challenge, and a lot of work has to be still done, though KVIC is looking into it. Some of the other aspects has been already taken into consideration regarding increasing some taxation on import of bamboo and all those issues. Next. This is something very important when you talk about agarbatti. The sticks cost only about 10% of the entire business. The rest 30% is the perfume, and the rest 30% is the packaging. 20% talks about the marketing, and the rest goes for the miscellaneous. So normally when you make a stick and you take it for granted that my task is being done, but a good amount has to be spent on on fragrances. Only then you are going to get a success, and this is the real breakup of the production pattern. Next. These are the few recent development. The import duty has been moved from 10 to 25% on bamboo. The import of raw agarbatti has came into as a restricted material from 31st August 2019, and nearly more than 800 crore of agarbatti which was being imported earlier has been taken into restricted category, which is practically stopped, and it is very difficult to get a license. And those who have been trying, they must be knowing it. It's not at all easy being into the restricted category. It is being stopped by DGFT when you are going to ask for a license. Number of MNCs are coming into it, and particularly the recent development which has taken place. If you are interested, you can go to the website of the Khadi Village Industry Commission. The CEO of the KVIC was here. They do have a detailed vision document for agarbatti. They have started spending good amount of money on research and development related to the agarbatti. They have started giving agarbatti hand operated, pedal operated, and the fully automatic machine to the industry people, so that they could able to go ahead into these sectors, and lot of research are being done, and some of the other efforts has been taken, which I will cite later on. Next, please. Next. There are still few challenges. Number one, there is no testing facility for agarbatti. There is no organization as on date. There is nothing standard as on date. When you are making, you can't say whether this is the same agarbatti which has been made in the last batch. So that is an issue. The compatibility of Indian stick with the machine, which is an issue, though there are people, those who are working to make it compatible, otherwise we're still dependent on them to imported sticks. There is no dedicated R&D institutes who is working exclusively on agarbatti as on date.
though KVIC has started taking different CSIR, FFDC, they have declared FFDC as a center of excellence. In the past, we have done some work. So that is even the raw materials is not standardized. Awareness about the fragrance is quite low. People do buy anything which is available in the market, whether it has been made for a cream or a shampoo, and it is being put onto the agarbatti. And then the training, the staff and the people on all the aspects related to the agarbatti. अगरबत्ती के सारे एस्पेक्ट पर ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं. आमतौर पर अगरबत्ती रोल करना या मशीन से आपने बना लिया और उतने को ही मान लेते हैं कि आप ट्रेंड हो गए, जबकि मैंने आपको पहले दिखाया अगरबत्ती बिजनेस का ये मात्र 10% हिस्सा है. जब तक आपको फ्रैग्रेंस पैकेजिंग के एस्पेक्ट पर चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती, आपका काम कभी भी पूरा नहीं होता. और अभी तक आप जहां कहीं भी आपने ट्रेनिंग होती हुई देखी होगी इन मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, वहां केवल आदमी अगरबत्ती रोल कर लेता है और ये मान लेता है कि मुझे अगरबत्ती बनाना आ गया. नेक्स्ट. देन देयर आर स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. इंडियन फ्लोरा इज फेयरली रिच. बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिनको अभी भी हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको एक दो स्टॉल दिखाई देंगे जिन्होंने पत्ती को के पाउडर को लिया है, उसे पेटेंट किया है, उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं. ऐसे बहुत सा पोटेंशियल्स है. CSR has came up with the aroma mission and the floriculture mission. Definitely oil extraction के बाद, flower के बाकी utilization के बाद अभी भी बहुत पोटेंशियल है कि उसके de-oiled मटेरियल को हम अगरबत्ती में इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सा प्रोस्पेक्ट है जहां पर हम अगरबत्ती में अभी भी इनोवेट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए जा सकते हैं और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी भी अवेट कर रहा है आप हम सब के लिए. नेक्स्ट. जहां पोटेंशियल है वो ये है कि एक अभी भी जो अगरबत्ती का सेक्टर है, हम में से ज़्यादातर जो अगरबत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट टेक्निकल सेंस में देखें तो उस अगरबत्ती का फाइनेंशियल एंगल पर अगर देखें तो मेजर हिस्सा केमिकल्स है और अगरबत्ती नहीं है. और शायद ऐसे बहुत सारे मटेरियल इस्तेमाल करने पर रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं. कभी कभी चाइना से या किसी कंट्री से रिपोर्ट सुनाई देती है आपको कि सर इस अगरबत्ती को इस्तेमाल करने पर जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कभी GTV में न्यूज़ सुनाई दे जाती है कि साहब इसको इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाएगा, इसको इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. कारण यही कि हम वो बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिनका हमें पता नहीं होता. तो ऐसे भी केसेस की कोशिश की जा सकती है जहां आप ये कह सकें कि अगरबत्ती मेरी 100% नेचुरल और हर्बल है. दैट इज वन. अरोमा थेरेपी एंड अरोमाकोलॉजी. अभी सुबह भी कई बार डिस्कशन हो रहा था रमाकांत जी के साथ और कई लोगों के साथ कि एक बहुत पोटेंशियल एरिया है जहां आप खुशबू को इस दिशा में लेके जा सकते हैं. क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के बाहर तो जो रिटेलर है वो तय करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल मटेरियल्स हैं जिनसे मेमोरी बढ़ती है, जिनसे मेडिटेशन होता है, जिनसे स्ट्रेस दूर होता है. उनको अगर आप इस्तेमाल करके अगरबत्ती बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो आपके लिए अवेट कर रहा है और जहां प्रॉस्पेक्ट्स है. और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप एक उसी रूटीन बिजनेस के अलावा बाहर नहीं जाएंगे. ये बिल्कुल वैसी ही बात है. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है. हम नोकिया इस्तेमाल करते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन आज वो मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तब मोबाइल केवल और केवल बात करने के लिए होता था और आज जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो केवल बात करने के लिए नहीं होता. आपको इस बात से बाहर निकलना होगा कि हम अगरबत्ती पूजा के लिए बेचेंगे. आप इस बात से जिस दिन बाहर निकल जाएंगे कि हमें अगरबत्ती पूजा के लिए नहीं बेचनी है, हमें ये रूम फ्रेशनर के लिए बेचनी है, या हमें मेडिटेट करने के लिए बेचनी है, आपको नींद नहीं आती हमें इसके लिए बेचनी है, ये इसलिए बेचनी है कि अगर आप इसको अपने बच्चे के पास लगा देंगे तो उसकी थोड़ी सी मेमोरी ठीक हो जाएगी, उसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन ठीक हो जाएगा. ये वो पोटेंशियल है कि अगर आपने, और ऐसे मटेरियल्स हैं, नोन है अरोमा थेरेपी के सेक्टर्स में. हम FFDC में भी ऐसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन. हमसे पहले रमाकांत जी ने भी इस बारे में चर्चा की थी. तो ये सेक्टर्स मेडिटेशन का सेक्टर्स हैं ऐसे जहां हम अगर डेविएट करें, इनोवेट करें और ऐसा कुछ नया सोचें तो बहुत पोटेंशियल है. अदरवाइज देयर इज अ रूटीन मार्केट, देयर इज अ रूटीन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे. और आपको डेफिनेटली उन प्लेयर से जो 500-700 करोड़ के टर्नओवर पे हैं
बहुत टफ फाइट होगी, क्योंकि आप तो डब्बा बाहर बनवाते हैं और उनकी पूरी पैकेजिंग की फुल फ्लेज एकड़्स में यूनिट लगी होती है। तो आप कभी compete करके बाहर निकलेंगे नहीं जब तक आप इनोवेट करके कुछ आपकी अपनी यूएसपी नहीं होगी, और जब तक इन सेक्टर्स में कहीं आप हाथ नहीं डालते। बहुत ज्यादा एक लिमिट के बियॉन्ड जाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट फ्यू स्लाइड, आई विल गो लिटिल फास्ट। एफएफडीसी ने पास्ट के कुछ समय में अगरबत्ती में क्या किया। नेक्स्ट। ये एक हमारा सेंटर है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का सेंटर है, और बहुत प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि अगर खेती से खुशबू तक की बात की जाए, एक छत के नीचे जहाँ आप खेती करते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, खाने की खुशबू बनाते हैं, लगाने की खुशबू बनाते हैं, ऐसा कोई भी सेंटर दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं। एक छत के नीचे जहाँ आप खेती से खुशबू तक की बात कर सकते हो, ये इकलौता सेंटर है। नेक्स्ट प्लीज। एंड द सेक्टर्स वेयर वी आर वर्किंग, जहां हम अगरबत्ती इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को सर्टिफाई करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, इस सेक्टर में कंसल्टेंसी देना, ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स देना। हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रन करते हैं और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को ऑन डिमांड रन करना। नेक्स्ट प्लीज। जो हम अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए अभी मदद करते हैं, वी डू डिजाइन फ्रेग्रेंसेज ऑन अ डिमांड बेसिस। मार्केट ट्रायल के लिए अगर आवश्यकता होती है तो हम फ्रेग्रेंस ट्रायल के लिए सप्लाई भी कर देते हैं, बाद में हम उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देते हैं। इन फ्रेग्रेंसेस की, इन रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग की, और इंडिया की सबसे पुरानी एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब 1998 से कन्नौज में है हमारे पास, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की जितनी भी मिंट की फॉरवर्ड ट्रेडिंग है पिछले 15 साल से एनालिटिकली हम ही कंट्रोल करते हैं। देन फ्रेग्रेंस डिजाइनिंग के लिए, अभी इसके पहले भी आप में से कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि सर हम खुशबू बनाते हैं या अगरबत्ती के लिए बनाते हैं, क्या आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि सर हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन 4-5 दिन के कोर्सेज हैं जो आप अगरबत्ती के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आप 4-5 दिन में अगरबत्ती बनाने की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। बेसिक कोर्स है, उसके बाद एडवांस लेवल का भी कोर्स है, जिसे लेवल 1 लेवल 2 हम कहते हैं। 4-4 5-5 दिन के कोर्स हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कन्नौज आके भी कर सकते हैं। हमारा हमने आपको पहले वीडियो भी इसलिए दिखाया, कुछ 23 एकड़ का हमारा पूरा कैंपस है जहां आप रहकर ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नहीं आप आ सकते हैं तो ऑनलाइन आपको किट पहुंच जाती है, आप घर पर रहकर भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस हॉल में भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिन्होंने ऐसी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इंस्टॉल किए हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी अलग अलग एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, कल्टीवेशन में, फ्रेग्रेंस फ्लेवर फॉर्मुलेशंस में, प्रोसेसिंग में, टेस्टिंग में और ट्रेनिंग में। नेक्स्ट प्लीज। लगभग पिछले कुछ 10-12 सालों में हम 3656 लोगों को अगरबत्ती के सेगमेंट में ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें लगभग मेल और फीमेल का ये रेशियो है। नेक्स्ट। केवीआईसी के लिए हम 3 बैच मास्टर ट्रेनर्स 2020, 22 और 23 में ट्रेन कर चुके हैं, और अगर केवीआईसी फर्दर आपको ट्रेनिंग के लिए कोई सपोर्ट देता है तो यही वो मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो आपको फर्दर ट्रेनिंग देंगे, जो अभी भी देश के अलग अलग भागों में देते हैं। और उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान्ड स्ट्रक्चर प्लान किया गया 2019 के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस के बाद, और जिसके तहत ये मास्टर ट्रेनर उसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर एक क्वालिटी अगरबत्ती बनाने के लिए आपको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं। ये 3 अलग अलग बैच हैं जिनको हमने ट्रेन किया है, 10-10 दिन केवल अगरबत्ती और उससे रिलेटेड परफ्यूमरी के एस्पेक्ट्स पर। नेक्स्ट। इसके अलावा ये कहानी बननी होती केवीआईसी के ऑफिसर्स को जो पॉलिसी बनाते हैं इस कंट्री में अगरबत्ती को लेके, उनके 2 बैचेस को, एक बैच को हमने 2022 में और अगले को 2023 में बेंगलोर में, और एक को रिसेंटली कन्नौज में ट्रेन किया, ताकि वो पॉलिसी बनाते वक्त जो अगरबत्ती की निटिग्रिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझ सकें। नेक्स्ट प्लीज। ये और बहुत सी आउट स्टेशन ट्रेनिंग्स हैं जो हम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में करते रहते हैं। नेक्स्ट। हमने हरियाणा में लगभग 450
स्पेशली एबल्ड बच्चों को ट्रेन किया और उनमें से बहुत सारे हैं जो छोटा मोटा अपना काम अभी शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये हमारा अक्रॉस द नेशन हमने जो अगरबत्ती में ट्रेनिंग दी है, किस किस स्टेट में कहाँ दी है, ये उसका इंडिकेशन है, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हम पूरे कंट्री में कहाँ कहाँ लोगों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। महाराष्ट्र में भी हम फ्रैग्रेंस फ्लेवर के सेक्टर में पिछले कुछ 7-8 वर्षों में करीब 13 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उसका ये ब्रेकअप है, जहां हरियाणा गवर्नमेंट, KVIC और महाराष्ट्र, यूपी, नॉर्थ ईस्ट, नेशनल बैम्बू मिशन, इनके साथ अलग अलग हम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे अगरबत्ती से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हुए हैं। नेक्स्ट, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वहाँ पर बहुत क्लियर नहीं था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये उसी लिस्ट का और डिटेल हिस्सा है। नेक्स्ट, ये कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो FFDC से हमने बिल्डअप की। KVIC ने ये फंड्स दिए थे हमें, जिसमें हमने फ्लोरल वेस्ट का अभी इशू ऋषभ कोठारी भी बता रहे थे, फ्लोरल वेस्ट से, काऊ डंग से और क्वायर पिट से। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में जितना भी फ्लावर निकलता है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी बिल्डअप करके वहाँ पर 210 माताओं को ट्रेन करके पूरा प्लांट एंड मशीनरी हमने लगा रखी है, जहाँ पर आज भी जो भी बाके बिहारी के मंदिर से वृंदावन में फूल निकलता है उससे ड्राई करके पाउडर बनाना, पाउडर करके अगरबत्ती बनाना, और अगरबत्ती बनाने के साथ उनके लिए नेचुरल फ्रैग्रेंस डिज़ाइन करके हमने दे रखी है। अगरबत्ती के साथ साथ वो इन फ्लोरल वेस्ट से गुलाल भी बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट, कुछ ये R&D प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पाइपलाइन में हैं। अगरवुड का जिक्र अभी सुबह ऋषभ कोठारी कर रहे थे। अगरवुड से के डी-ऑइल्ड मटेरियल से अगरबत्ती बनाने का प्रोजेक्ट, और लेमन ग्रास से, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, जो अभी हम टास्क को अभी हमने लिया हुआ है, एक त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए और एक KVIC के लिए। नेक्स्ट, एक बहुत नेक्स्ट बर्निंग इश्यूज की अगरबत्ती का कोई BIS स्टैंडर्ड नहीं है। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड FFDC ने ऑलरेडी ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ मिलके BIS में प्लेस किया हुआ है, और पर्पसली इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हैंडमेड, मशीन मेड और अब मसाला अगरबत्ती के लिए 3 अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स हों, जो मशीन अगरबत्ती के लिए थोड़े स्ट्रिंजेंट होंगे और मसाला और हैंडमेड अगरबत्ती में जहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। तो बहुत डिटेल टास्क किया हुआ है। कुछ टेस्टिंग के पैरामीटर्स को लेके इश्यूज हैं जो अगले कुछ 1 महीनों में फाइनलाइज हो जाएंगे, और प्रॉब्ली अगले 4 से 6 महीने में इस बात की संभावना है कि अगरबत्ती का BIS स्टैंडर्ड आ जाएगा, और आने के बाद FFDC में उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्ली जो अभी तक इश्यूज था कि अगरबत्ती का स्टैंडर्ड्स नहीं है, या आप किसी थर्ड पार्टी से बनवाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि अगरबत्ती ठीक बनी है नहीं बनी है, वो ये सारे इश्यूज और इवन इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद और ये बनने के बाद हमारे लिए गर्व की बात होगी कि अभी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास अगरबत्ती का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। ये इंडिया पहली कंट्री होगी जहां से हम अगरबत्ती का स्टैंडर्ड लेकर अगले कुछ 1 महीने में आएंगे। ड्राफ्ट ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट प्लीज। जहां पर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो ये है कि अगर आने वाले टाइम में अगरबत्ती के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं टेस्ट फ्रैग्रेंसेस के लिए, उसके कंपोनेंट की और अगरबत्ती की, अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हो तो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सो इन जनरल नेक्स्ट, अगरबत्ती के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन स्टिल अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि हम इंडस्ट्री, KVIC और FFDC के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएं जहां हम रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स को लेकर रिजॉल्व करें, वरना जिस गति से गोयल साहब काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को शोकेस कर रहे हैं, नो डाउट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लेकिन रॉ मटेरियल के इश्यूज आने वाले समय में डेफिनेटली आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो वी नीड टू लुक इनटू दोज इश्यूज एंड वी नीड टू वर्क ऑन टू दोज इश्यूज। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे रमाकांत जी ने भी चर्चा की थी कि हम रॉ मटेरियल्स ढूंढ लें, तो
जलाने वाले रॉ मटेरियल्स की समस्या का तो हल है, लेकिन जिगत जैसे रॉ मटेरियल और बेम्बो की रॉ मटेरियल की समस्याएं आने वाले समय में हमारे सामने मुंह आकर फिर भी खड़े होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. सो वी नीड टू वर्क ऑन टू दोज एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट. So at FFDC, you got able to get a solution for a number of these issues. Next. And that's all. मेरी email ID दी. अगर आपको कोई information further चाहिए या और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमको email कर सकते हैं, और अगर आपका अभी कोई सवाल है तो I'm open for it. आप पूछ सकते हैं. That's all. Thank you. Thank you so much, sir. Any questions? Audience में से कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं सर से? Anyone want to ask something from sir? Okay, so on behalf of Incense Media, we would like to thank sir for giving us a great session in this journey of fragrance and farming. Sir took us from the very initial stage to the last stage, and sir want to ask something. Okay, sir. Hello. Namaskar, sir. My name is Satya Prabhu, actually from Tamil Nadu, Tirupur है. कॉयर पित यूज करके आप इंसेंस बनाने के बारे में आपने बोला ना? हाँ. हमारे एरिया में पूरा कॉयर पित मिलता है. हाँ. तो मेन कॉयर पित की बेस जो है हमारे एरिया से है. हम कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से. उसी को ध्यान में रख के ही बनाया है. हाँ सर, वो कैसे बना सर सकते हैं? आप हमको एक ईमेल लिखिए. वी कैन ट्रांसफर यू द टेक्नोलॉजी ऑन अ वेरी टोकन अमाउंट. ओके, प्राइस वाइज कितना डिफरेंस रहेगा सर? मैं क्यों उसको कॉयर पित यूज करूँ? तो जब आप हमसे सर क्वाइट पिट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बाई वेट जो अगरबत्ती का काउंट है वो ज्यादा आएगा. ठीक है. तो अगरबत्ती का काउंट ज्यादा आएगा तो इंडस्ट्री में क्या होना है ये बताने की जरूरत नहीं, ये बात सारे लोग जानते हैं. ठीक है. सो द काउंट वुड बी फेयरली रिलेटिवली हाई. अगर आप 1 किलो में अगर किसी का काउंट 1000 आता है तो उसका काउंट 11 से 1200 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ एंड द थिकनेस. तो जहां पर अगरबत्ती का काउंट ज्यादा आएगा, आप किसी भी इंडस्ट्री को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़े आसानी से एक अच्छा प्राइस और एक अच्छा पोटेंशियल मिल जाता है. बाकी ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वायर पिट किस प्राइस पर मिल रहा है, इसके ऊपर है. बट द टेक्नोलॉजी इज विद अस. आप चाहोगे तो हम दे सकते हैं. 2 वैरायटी कॉयर पिट मिलती है सर. एक हाई सी मिलता है, एक दूसरा लो सी मिलता है. सर हमने पर्टिकुलर पाउडर करके एक पर्टिकुलर मेस साइज पर बनाया है, वो डिटेल में आपको शेयर कर दूँ. ठीक है सर. थैंक यू. आई वांट योर कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो सर. सर आई हैव गिवन यू माय ईमेल आईडी एंड इफ यू वांट माय कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन नोट इट डाउन. बट बेटर वुड बी एन SMS, क्योंकि अभी भी 10-12 कॉल आके जा चुके हैं. सो 9415334050. अदरवाइज दिस इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट टू. 15334050. So sir has given his contact number, which is the ultimate answers to all the question. If anyone want to ask anything to sirs, you can visit the website and ask it on the phone number or via SMS. So now it's our responsibility on behalf of Incense Media to thank sir for giving us so much knowledge, information and gaining us. So we are giving a token of love by the hands of respected Mr. Deepak Goyal sir. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों ही महानुभावों के लिए जो कि इस समय मंच पर उपस्थित है. एक जिन्होंने पूरे इंसेंस इंडस्ट्री को जोड़ के रखा है और एक जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से फार्मर्स से लेकर के फ्रेग्रेंस तक का सफर तय किया जा सकता है. सो बिग थैंक टू इंसेंस मीडिया एंड बिग थैंक टू FFDC फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट्स इन द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री. होप एवरीवन एंजॉयड द सेशन एंड गेन्ड सो मच नॉलेज अबाउट farming to the journey of fragrance. So now it's time for us to wind up all the sessions, and with this conference hall we are leaving for our exhibition area. So I request all the visitors and exhibitors to once again join us to the exhibition area, visit various stalls, gain knowledge, gain fragrance and refresh your mood with all the agarbatti, perfume, detergent and various stalls. So I request all of you to join us with the beautiful and amazing expo which is organized by Incense Media. Once again on behalf of Incense Media, I would like to thank each and everyone present over here. Tomorrow we are also going to head various sessions in which we are going to listen to various speakers. One speaker, Dr. Sitaram Dikshit sir, is with us. More speakers are going to join us for tomorrow's session. So I request all of you to also visit us tomorrow and enjoy this expo and gain some knowledge about our industry. Thank you so much. So I would like to thank Incense Media for organizing this expo.
On behalf of Incense Media, we would like to thank all our sponsors, our main sponsor, Delta Brand, our co-sponsor, Norax 28, Ocean Deep Printers, Lave Fragrance, Lakshmi Products, Ashapura, FROM, Haridarshan, Aromatica, Singapore Ship, and Ikta Aromatics. Other sponsors, Shimmer Sugandhiya, Forest Fragrance, Nikhil's Agarbatti, Ram Aromatics, and our technical partner, FFDC. So once again, I would like to thank all our sponsors, co-sponsors, and our technical partner. Thank you very much.